सो गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। कैसे हैं? ऑल गुड सर, नमस्कार सर। नहीं सब सर, बढ़िया सर। नमस्कार। गुड 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 गुड। जतिन जी से ही बात होती, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। कौन जी? जतिन जी, जतिन जी। अच्छा, जतिन जी भी ज्वाइन कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर आपके इस पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है ना? मेरे इस पे शेयर का ऑप्शन, हाँ जी, आ रहा है जी। ग्रीन कलर का आ रहा है ना? एक बार शेयर कर लेना सर पीपीटी। ओके। हाँ जी सर, परफेक्टली फाइन। ओके। राइट, हो रहा है सर। आपके एंड पे सर थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। मेरे मेरे यहाँ तो नहीं है जी। मेरा तो नेटवर्क पूरा है जी, और कंप्लीट है। मेरे पास रेड का आ रहा है। अच्छा, ओके, मैं देखता हूँ सर। जी 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 जी।
200-day expert. So we will wait for around next 5 minutes. Let the other participants join, members join. Then we'll No issues, sir. proceed. No issues. No issues. Okay, sir.
जतिन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? वेरी फाइन जी, वेरी फाइन। इन लुधियाना और कहीं एल्सवेयर? नहीं सर, लुधियाना इन ऑफिस सर। अच्छा आप अच्छा। बताइए सर, ऑल वेल? वो ऑल वेल सर, ऑल वेल। चलो सर, आज वॉलंटरी लिक्विडेशन के बारे में सुनने का मौका मिलेगा। अरे ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट जी जी। जी नहीं, ये सर। तो सब Hello, डिस्कशन का पार्ट है जी, सब डिस्कशंस हैं। एब्सोल्युटली कई सर। चीजें हम आपसे सीखते हैं, कई हम बता सकते हैं, कुछ आप अच्छे से बता सकते हो, तो इट्स अ गिव एंड टेक पॉलिसी। राइट सर, राइट राइट। नॉलेज शेयरिंग तो ऐसी होती है ना जी, कि कई चीजें एब्सोल्युटली सर। जो आज का टाइम है उसमें क्या है कि सभी लोग जो है ना, वो लर्निंग पोजीशन में आ गए हैं, फिर दोबारा से स्टडी वाली पोजीशन में आ गए। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो है ना, चीज़ें जो है ना बड़ी स्पीड से चेंज हो रही हैं। और दूसरा, जब ये जो ऑनलाइन आ गया ना सारा, हम है वो फिजिकल फाइलिंग वाले लोग, ठीक है ना। तो फिजिकल फाइलिंग से अब यहाँ V1, फिर V2, फिर V3, अभी सुनने में आ रहा है V4 भी आ रहा है जी जी। सर जी। अभी तो और पता नहीं क्या क्या देखना बाकी है, तो वो सब अभी वो बैक टू स्केयर वन है जी, सब लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बट सर, वो अच्छा लगता ना कि आप उस मतलब एरा से आए जब जहाँ पे आपने ये पूरी ट्रांजिशन फेज देखा है, फ्रॉम फिजिकल फाइलिंग जी टू जी 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 के। जी जी जी। और जहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल। आपने चैलेंजेस फेस करे होंगे खुद हाई कोर्ट में, मतलब अपीयर तो नहीं हो सकते, बट एटलीस्ट वो चैलेंजेस थे। अब वो हमारे लिए डेडिकेटेड जी कोर्ट भी है। तो ये वॉलंटरी जी 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 लिक्विडेशन जी इज जी ऑल्सो जी वन ऑफ जी दैट जी पार्ट। चलो, ऑलवेज गुड टू जी हैव जी जी सर। जी। so with your permission, can we start? या ये सर, प्लीज प्लीज सर, Yeah. प्लीज प्लीज, यस वी Yeah. कैन स्टार्ट। Good afternoon, everyone. First of all, thank you for joining this webinar series we have been continuing from last 1 year. And yesterday also we had one webinar on practical insight and opportunities for company secretary on FP and FCS, hosted by CS Manoj Kumar Gupta ji, hailing from Kanpur. And today again we have one of the stalwart from the Chandigarh and CS Vishwajit Gupta sir. Sir, we welcome you and we are really glad that you have given us time for this webinar. The intent has been very clear, sir, to keep on sharing the knowledge. As you rightly said, that हम सब वापस knowledge sharing वाले era में आ गए हैं, जहाँ पे knowledge is everything, right? So, while not taking much time, I will just give a brief profile of Vishwajit sir. Vishwajit Gupta sir is a Bachelor of Commerce and a law graduate from Kurukshetra University and is a fellow member of ICSI, having rich experience of about 25 years as a company secretary in whole-time practice. He is also an insolvency professional registered with IBBI. He remained in the managing committee of Chandigarh of ICSI for a continuous period of 12 years from 2010 to 2022. He served as a secretary, as a vice chairman, even as a chairman of Chandigarh chapter. They had delivered various lectures in student induction program, executive development program, management skills oriented program of ICSI, webinar, seminar in various chapters. He remained on the panel of Mediation Conciliation Committee of RD of MCA, Chennai. He also conducted many career awareness programs for company secretaries in various school, colleges in and around Chandigarh. Sir, we welcome you today. So are you there? अभिनव जी, Yes, कैन sir. यू You हियर? are visible. Yes, yes, sir. ओके ओके। Yeah, great. So we welcome you today and looking forward to a great in-depth insight on volunteer topic, volunteering winding up and their insight under IBC. And I will also, we also have CS Jatin Singalji with us. He is a former chairman of NIRC ICSI. So we are glad that he has joined this webinar. So I'll request Jatinji if he can share a few words of wisdom and motivation, and then we can proceed with the webinar. Yes. Thank you, Abhinav. First of all, congratulations to pick this particular topic. In company law, with respect to corporate sector of India, we always know that it is easy to enter into the corporate sector, but at some point of time, there are options coming way in the mindset of the promoters that they need to take an exit. Earlier, there were no such specific route were provided under the exit option. I know I heard that in past from the seniors as well, when people used to have a corporate that whether they remain or not on this planet, but their name through the corporate should start on, मतलब should continue to exist on this particular channel. And considering this
fact, the voluntary liquidation was brought in through the IBC provision in 2017. And I have also handled couple of such cases wherein the proper planning before entering into this voluntary liquidation process needs to be there. And accordingly, the voluntary liquidation achieves the full purpose about this particular process. So, though it is covered under IBC, but it is still under the domain of Insolvency Act, and will not take much of the time of this crucial time of the participants. I request Vishwajit sir, who is an expert to this, and being IP and insolvency professional, one can also take this matter before NCLT for final disposal. Thank you so much, Abhinav. Thank you so much, Vishwajit sir, and thank you all the Thank participants who have you. joined and taken their time out from this busy schedule in the afternoon. And I'm hopeful that this will be a fruitful session for everyone. Thank you. Thank you. Thank you, Jatin ji. Thank you very much. So, I have been given this topic today, voluntary liquidation as a corporate exit route, because this is the last step in the life of the company, which is taken by the management itself. Voluntary liquidation, जैसा इसका नाम है ना कि voluntary liquidation, liquidation voluntarily means by the company. So liquidation by the company means when I have to liquidate my company, this right start to start the business and to finish the business. Both are my uh, fundamental rights. फिर दिक्कत आ गई कोई. Can you hear me, sir? Yes, sir, we can hear you, sir. Okay, just hold. So when a citizen of India has to start the business and when to close the business, this is the right fund. This is my fundamental right of the citizen. When a citizen of India will start the business or when he will close the business, this is the fundamental right given under Article 19(1)(g) of the Constitution of India. The right to practice any profession or to carry on any occupation, trade, or business to all citizens is subject to certain restrictions imposed by the state. So this is the right to practice a profession, carry on any occupation, trade, or business. This is the right given by the Constitution of India, but it is subject to certain restrictions. You cannot start any business without some approvals and some licenses, and you can simultaneously you cannot close a business by completing some compliances as per the law. So certain restrictions are what certain just like carrying on any unlawful activity, you cannot do that activity. Obtaining certain approvals and licenses, this is the prerequisites to start a business. The right to carry on a business includes the right to close it and at any time depending upon the desire of the owner. So it is your desire when you want to close the business, but it is again with certain restrictions. The state cannot compel any citizen to run a business which is against his will, but as no right is absolute, the right to close a business is also not absolute right. It is subject to certain restrictions. So certain restrictions are given under the law, right? So you have to follow the procedure of the law for closing of a business of any corporate person. So what is voluntary liquidation? Voluntary liquidation is self-imposed winding up and dissolution of a corporate person that has been approved by its shareholders, partners, contributors. So these three uh, terms are given: shareholders, partners, contributors. I will discuss later on. So if these persons, shareholders, partners, contributors, these approve that a corporate person shall be dissolved, then through voluntary liquidation, then that corporate person will be liquidated voluntarily, but subject to the provisions of the law.
Such a decision will happen once an organization's leadership decides that company has no reason to continue, and it is not a compulsory winding up by the order of the court, because compulsory winding up by the order of the court is given in IBC when a company goes into CIRP and corporate insolvency resolution process, if fails, or if the resolution plan doesn't come off or if the resolution plan comes and the successful resolution applicant, that person can doesn't carry the terms and conditions of the resolution plan, then the compulsory order, winding up order, that is been passed by the NCLT, the National Company Law Tribunal. So that is compulsory winding up by the order of the court. And second is given under section 271 of the Companies Act 2013. But if the company doesn't comply with the certain conditions, then the shareholders, they can go for and the for winding up of the company through NCLT, and the court will pass the order accordingly. So that will be compulsory winding up. But voluntarily winding up, it is self-imposed winding up. Under IBC, Section 59 deals with the voluntary liquidation of the company. Now, primary objective of the liquidation is to terminate its operations, sell off all its assets, and dismantle its corporate structure, and to ensure that assets of the corporate person are distributed fairly among its creditors and shareholders in a systematic manner, while also promoting a swift and efficient exit from the business. So primary objective is to distribute all the assets, to or sell off all the assets of the corporate person among the creditors and the shareholders, and then the voluntarily then an application shall be filed with the NCLT for dissolution of the corporate person. Now, applicability of provisions. Now we come to the provisions of the voluntary liquidation. Applicability of the provisions, section 304 to 323 of the Companies Act 2013 were dealing with the voluntary liquidation, but these sections were not notified. And section 255 of the IBC 2016 provides that Companies Act 2013 shall be amended in a manner specified in 11th schedule. 11th schedule is given in the IBC, according to which the Companies Act 2013 can be amended. And by virtue of the notification of the 11th schedule of the code, with effect from 15th November 2016, various winding up provisions of the Companies Act 2013 were amended, and voluntarily winding up section 304 to section T323 were omitted, and the same have been incorporated under IBC 2016. And central government on 30th March 2017 notified section 59 of IBC 2016, which deals with the voluntary liquidation of the corporate person with effect from 1st April 2017. And on the very next day, that is 31st March 2017, IBBI notified IBBI Voluntary Liquidation Process Regulation 2017 with effect from 1st April 2017. So both section 59 as well as the voluntary liquidation process regulations, they came into effect with effect from 1st April 2017. Before that, they were not notified either by the Companies Act 2013 or by the IBC. Now, definition of the corporate person, that is given under section 3 subsection 7 of IBC. Corporate person means what? Corporate person under the code means companies which are incorporated under the Companies Act 2013 and any previous Companies Act. Previous Companies Act 1956, 1912 or any other previous act. So all the companies which have been incorporated under the Companies Act 2013 and previous any Companies Act, they are treated as companies as per and they will be treated as corporate person as per the for the purpose of voluntary liquidation. Limited liability partnerships formed and registered under the Limited Liability Partnership Act 2008.
and any other person incorporated with limited liability under any law. If any other person has been incorporated as limited liability under any law for the time in force, but shall not include any financial service provider. Financial service provider, which is defined under section 3 subsection 17, that doesn't come under the definition of corporate person. But sorry, that is not cannot be wound up through voluntary liquidation. Any other person incorporated with limited liability under any law for the time being in force means this is given under section 2 subsection B and D of the Insolvency and Bankruptcy Code. So any other company governed by a special act for the time being in force, and such other body incorporated under any law for the time being in force, and such as LLPs or governed by special act means just like insurance companies, there is insurance act, banking companies, banking regulation act is there, electricity supply company, and another company governed by special act for the time being in force. So these are all come under the definition of corporate person under section 3 subsection 7. No, chapter 559 deals with the conditions of the voluntary liquidation. A corporate person who intends to liquidate itself voluntarily, first condition is this. Second, has not committed any default, means company, this corporate person must be fully solvent. So if the company is having the total assets of rupees 100 and the liabilities of rupees 100, the company shall be treated as fully solvent. If the liabilities are more than 100, then company is not solvent, company cannot be closed voluntarily. May initiate voluntary liquidation proceedings. So this is the first condition, two conditions, that who intends to liquidate in itself voluntarily means I'll discuss it later on, the how the intends to liquidate itself voluntarily. Default means a non-payment of debt when whole or any part or installment of the amount of debt has become due and payable and is not paid. So debt must be there, debt become due, due must be there, and then it is it is not repaid, means default. So 3Ds are these are seen by the NCLT while taking into view the meaning of default. Then debt must be a debt, due, and default. So if these three conditions are comply with, then default is there. And that means any liability or obligation in respect of a claim which is due from a person and includes a financial debt and a potential debt. Both type of debts are included in the definition of debt, financial debt as well as operational debt. Now, prerequisites of the initiation of voluntary liquidation, section 59 subsection 3 and regulation 3. Prerequisites of initiation of voluntary liquidation. Liquidation को start करने के लिए prerequisites क्या क्या हैं? A declaration from the majority of directors of the corporate person, company, designated partner of the LLP, individual constituting the governing body in case of other corporate persons. And this declaration must be duly verified by an affidavit that they have made full inquiry into the affairs of the corporate person and formed an opinion that either CP has no debt, या तो CP के पास कोई भी डेट नहीं है, और it will be able to pay its debt in full out of the sale proceeds of the its assets to be sold in liquidation. या तो कोई डेट नहीं है, और अगर है तो जो भी वो लिक्विडेशन में जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं हमारी कंपनी के पास, उनको जब हम सेल आउट करेंगे तो उन एसेट्स की सेल के से जो भी पैसा आएगा, वी विल बी एबल टू पे ऑल आवर डेट्स बाय द प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ दोज एसेट्स. So this is this is to be written in the declaration. और declaration majority of directors को देनी है, DP designated partner को देनी है, और individual constituting the governing body, तो इनको देनी है. और it must be duly verified by an affidavit I have discussed. The corporate person is not being liquidated to defraud any person. ये भी हमने उसमें लिखना है.
declaration में. And third one is the corporate debtor has made sufficient provision to meet the obligations arising out of on account of pending proceedings, assessments before statutory authorities or pending litigations in respect of corporate person. So while preparing the declaration, these pending proceedings, assessments और लिटिगेशंस ये भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि पेंडिंग प्रोसीडिंग है, असेसमेंट्स हैं, लिटिगेशंस हैं, सो उनका भी मींस जो ऊपर हमने डिस्कस किया नंबर वन में, दैट कंपनी विल बी एबल टू पे इट्स डेट्स, दैट इज द लायबिलिटीज विच आर गिवन इन द बैलेंस शीट. एंड थर्ड वन इज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सीडी हैज मेड सफिशिएंट प्रोविजन टू मीट ऑब्लिगेशंस अराइजिंग आउट ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग्स. दीज आर कंटीजेंट लायबिलिटीज. सो लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज एज वेल एज कंटीजेंट लायबिलिटीज, दोनों को हमें ध्यान में रखना है. दोनों वी हैव टू टेक केयर ऑफ, and we have to see whether the company will be able to pay all these liabilities through the proceedings which will come in the company by a sale of its assets. Such declaration shall be accompanied with the following documents. जो ये declaration है, it should be on stamp paper, and ये जो declaration है, it must be notarized and duly signed by the majority of directors, and it must be accompanied by the following documents. Following document कौन से? Number one, audited financial statements and record of business operations of the corporate person for the previous 2 years. 2 साल की आपको बैलेंस शीट्स लगानी है, साथ में बिजनेस ऑपरेशंस लगाने हैं, साथ में कि क्या क्या बिजनेस ऑपरेशन रिकॉर्ड हमारा, ये कहाँ होता है हमारा रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस? दिस इज गिवन इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट. सो दीज डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अनेक्स्ड विद द डेक्लेरेशन. और अगर 2 साल से कम में कंपनी अपना वाइंडिंग अप कर रही है, if the company is being wound up within 2 years from the date of incorporation, then for the period since in its incorporation, whichever is later. So these documents are required to be annexed with the declaration of solvency. Next document is required to be annexed with the declaration of solvency is the valuation report of assets. So if the company is having assets, then the company will have to get these assets valued from the registered valuer registered with the Insolvency and Bankruptcy Code of India. So that valuation report is required to be taken by the corporate person, and that will be annexed with the declaration of solvency. Disclosure about the pending proceedings or assessments before the statutory authorities and pending litigations in respect of CD. So all disclosure about the pending proceedings, assessments before the statutory authorities, pending litigation, that has to be these are also to be annexed with the declaration of solvency. So declaration to list each of the debts. This is given under Regulation 3, Sub-Regulation 4 and 5. So in declaration, the declaration shall list each debt of CP as on the date of making declaration, and state that CP will be able to pay all its debts in full from the proceeds of the assets to be sold in liquidation. So you will have to list all the debts, means either you can give in declaration or you can annex with the declaration all the debts which the company has to pay in liquidation. The declaration shall also provide that the corporate person has made provision for the preservation of its record after its dissolution. This is given in Regulation 3, Sub-Regulation 5 के आफ्टर डिसोल्यूशन जो भी प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड है वो कैसे होगा, बिकॉज प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड इज मस्ट फॉर द लिक्विडेटर. वो दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन कि कितने टाइम के लिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिजर्व करने हैं. एंड एनी जो कोई भी अथॉरिटी अगर डॉक्यूमेंट्स मांगती है तो एज लिक्विडेटर यू हैव टू प्रोवाइड दो डॉक्यूमेंट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज. Prerequisites of the initiation of voluntary liquidation. So we are discussing this prerequisites. First, we have discussed about the declaration of solvency and the documents to be annexed with the
declaration of solvency. So after completion of these documents, after signing the declaration of solvency, and then within 4 weeks from such declaration, there shall be a special resolution of the members. So members will approve because board has no authority to approve the liquidation voluntarily, but only these shareholders has the power to approve the liquidation voluntarily. Yes, but the directors, they will assess about the situation of the corporate person, whether the corporate person will be able to pay its debts full from the assets of the company or not, and for that they will give declaration, and from the date of declaration within 4 weeks, the a special resolution of the members or resolution passed by the special majority of the partners or contributors requiring corporate person to be liquidator voluntarily. This has to be written in the resolution that corporate person wants to liquidate itself voluntarily, and appointing an insolvency professional to act as liquidator. So as per this, section 59(3), the and regulation 3, appointment of insolvency professional to act as liquidator means only the insolvency professional can be appointed as liquidator and no other person. Under the Companies Act 1956 or 2013, this this requirement is not was not there. But now in the IBC, appointment of insolvency professional only he for as liquidator, that is given. Or here is word given, or this is the word given, or a resolution of the members. ऊपर हमने पढ़ा है कि special resolution of the members. No, simple resolution of the members means ordinary resolution of the members, partners, contributors of the corporate person requiring the corporate person to be liquidated voluntarily as a result of expiry of the period of duration fixed by the articles or constitutional document. So if the constitutional document या articles तो company के केस में होते हैं, but in case of LLP, constitutional document is LLP agreement. So if there is written in the LLP agreement that we are incorporating this LLP or we are incorporating this company for this period of time, कई बार क्या होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल हम बना लेते हैं किसी पर्पस के लिए, कोई टेंडरिंग करनी है, टेंडरिंग लेनी है, उसके लिए हम कुछ एक नई कंपनी बना लेते हैं. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट पर्पस उसमें लिखा होता है कि दिस कंपनी विल बी क्लोज्ड. सो इफ एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ ड्यूरेशन और अकरेंस ऑफ इवेंट विच इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, अगर वो पूरा हो गया देन कंपनी विल बी डिसॉल्व, एंड इन दैट केस ओनली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड. बट in all other cases, special resolution or resolution by the special majority that is required. And appointing an insolvency professional to act as liquidator, this is the same condition which is given in case of special resolution. In case of corporate person owes any debt to any person, so if in the balance sheet there are liabilities given, so if there is no liability in the balance sheet, there is only capital and reserves and surplus. Then if this condition is that in the balance sheet, then this provision is not applicable. If the company is having liabilities in the balance sheet, then the creditors representing 2/3 in value of the total debt shall approve the resolution within 7 days of such resolution. Means after 28 within 4 weeks, the special resolution or the ordinary resolution as the case may be, that will be passed. And after passing the special resolution or ordinary resolution, that resolution shall be approved by the creditors having 2/3 of the in value of the total debts. They will approve. It means we will have to approach to creditors also that whether they want the voluntary liquidation of the company or not. So that resolution passed by the shareholder shall have to be approved by the creditors also. Now, what is occurrence of event? We have studied in the occurrence of event. This is the second
condition in which we have studied about the occurrence of event. The entity was formed with a specific objective. Now it has been fulfilled. So किसी ऑब्जेक्टिव के लिए हमने कंपनी बनाई थी, वो फुलफिल हो गया, तो कंपनी विल बी क्लोज्ड. If it is provided by the articles that entity should be liquidated on occurrence of an event and that event has occurred, even in that case also the company will be wound up. The examples: the company was set up for a project lasting 5 years. The company was incorporated to develop a property. किसी प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए हमने कंपनी बनाई थी, तो अब वो कंपनी प्रॉपर्टी डेवलप होगी. नाउ द पर्पस ऑफ द पर्पस फॉर incorporation of the company has been fulfilled. So now the company will be closed. It is unviable to carry on any business. So if there is no viability, कि viability नहीं है वो business को carry करना, in that case also the company can be closed. Parent company decides to shut down or divest a subsidiary as a part of restructuring plan. So in that case also the company will be closed voluntarily. Now contributory is who is contributory as per regulation 2 subregulation B means contribute member of the company, partner of the limited liability partnership, and any other person liable to contribute towards the assets of the corporate person in the event of liquidation. So these persons will be called as contributory. Now, when the resolution has been passed by the shareholders or the partners or the other person who are governing the corporate person, then this resolution shall be notified to the Register of Companies and Insolvency and Bankruptcy Board of India. दोनों को हमने ये resolution भेजना है कि ये resolution pass हो गया and the company is now in voluntary liquidation. The corporate person shall notify the ROC and the IBBI about the resolution to liquidate the company within 7 days. So please keep in mind the and take care of these timelines. ये timelines अपने को cross नहीं करनी है. Within 7 days means within 7 days. So this has to be filed with the notified to the ROC as well as IBBI of such और subsequent resolution by the creditors as the case may be. तो ये resolution हमको दोनों resolution passed by the shareholders as well as resolution passed by the creditors, these both resolution have to be notified to the ROC as well as IBBI. Now how to notify these resolution? You are all company secretaries और सबको पता है कि SR कहाँ जाता है, in form MGT 14 में. Now the annexes of the MGT 14 will be declaration of solvency, audited financial statements, a record of business operations of the last 2 years and valuation report. ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है ना GNL 2 में भी जाएंगे और MGT 14 में भी लगाना, क्योंकि कई बार MGT 14 को वो आजकल CPC में चला गया तो वो ये वॉलंटरी लिक्विडेशन वाले को वो वापस कर देते हैं. तो हम क्या करते हैं कि MGT 14 में भी ये सभी डॉक्यूमेंट्स वी एनेक्स के ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स हैव बीन अप्रूव्ड by the shareholders of the company. Now how to notify IBBI? तो पहले क्या होता था, पहले ये था कि हमें IBBI को मेल्स डालनी पड़ती थी because there were no forms in just like in case of CIRP. CIRP के केस में तो बहुत सारे फॉर्म्स पहले से ही हैं, लेकिन in case of voluntary liquidation there were no such like of forms. Now with effect from 28 June 2024 the IBBI has come up with the 4 forms: VL1, VL2, VL3 and VL4. So the timelines also given in within which these forms are to be filed, and these are the timelines. This in VL1 period covered and scope and timeline. VL1 this includes details of the corporate person. So just details of the corporate person, details of the voluntary liquidation process on or before 10th day of the second month after the public announcement. So जैसे ही आप लिक्विडेटर अपॉइंट होते हो तो लिक्विडेटर अपॉइंट होते ही आपको क्या करना, सबसे पहला काम यू विल हैव टू पब्लिश इन 2 न्यूज़पेपर्स दैट आई हैव बीन अपॉइंटेड. वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा. और जैसे ही आपने पब्लिक अनाउंसमेंट जिस डेट को भी पब्लिक अनाउंसमेंट करी, सपोज आज 28 फरवरी है, तो आज सपोज एक कोई पब्लिक अनाउंसमेंट आपने की तो आपको 10 मार्च से पहले पहले आपको ये VL1 फॉर्म IBBI को फाइल करना है. अगर आप इफ यू हैव पब्लिश्ड ऑन फर्स्ट, सपोज टुमारो ऑन 1st
March 2020, 2026, then 10th April से पहले पहले you will have to file form VL1 with the IBBI. So this is the timeline. Please keep in mind these timelines because with otherwise your process will be in problem. VL2, because that will become non-compliant. VL2, details of the meetings of the contributories with the reasons for delay in process, details of replacement of the liquidator if any, etc. So if there are meetings of the contributories for, for the because if you cross the time limits, because the corporate person which is being voluntarily wound up, the timeline is given in the regulations. I will discuss later on. That is, timeline is given in 90 days for in case the company doesn't have any creditor, or and if the company is having creditors, then the timeline is 270 days. You will have to complete the liquidation process. So if you cross these timelines, then you will have to file form VL2 on or before 10th day of the subsequent month after the meeting of the contributors or replacement of the liquidator. So if the liquidator is replaced, liquidator भी replace कर सकते हैं आप. सपोज लिक्विडेटर का कोई पर्सनल इंटरेस्ट कॉर्पोरेट पर्सन के साथ आ गया है, या लिक्विडेटर का जो है ना वो कोई ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हुआ है, तो दैट लिक्विडेटर विल बिकम इंसॉल्वेंसी, प्रोफेशनल पर्सन विल बिकम disqualified. So in that case, the corporate person will replace the liquidator. So in both cases, on or before 10th day of the subsequent month, the form VL2 will be filed with the Insolvency and Bankruptcy Board of India. Form VL3, details of dissolution application, details of unclaimed proceeds, details of realization and distribution made to the stakeholder, details of pending litigations, detection of fraud or insolvency if any. If these events occur, then form VL3 is to be filed on or before 10th day of subsequent month after submission of dissolution application of the corporate person. अगर dissolution हो गया तो dissolution application करने के नेक्स्ट सब्सिक्वेंट मंथ के 10th से पहले 10th डे से पहले पहले आपको फाइल करना है of the corp, or withdrawal or suspension of application for voluntary liquidation. So if you withdraw the voluntary liquidation, suspend the application for suspension application you have filed with the NCLT for for the liquidation process, then you will have to file form VL3 with the Insolvency and Bankruptcy Board of India. Now form VL4 is to be filed in case details of detail of the order of the dissolution. When the order of the NCLT comes, the order of the NCLT will have to be filed with the Insolvency and Bankruptcy Board of India in form VL4, and ऑन और बिफोर 14th डे ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर. ये ध्यान रखना, यहाँ बाकी सब जगह 10th डे ऑफ द सेकंड मंथ है, बट यहाँ है कि जिस दिन आपका ऑर्डर पास हुआ तो विद इन 14 days ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन यू विल हैव टू फाइल form VL4 with the Insolvency and Bankruptcy Board of India, or withdrawal of the withdrawal of the VLP voluntary liquidation process, और सस्पेंशन ऑफ द वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस. कोई भी इसमें से कोई भी इवेंट अगर होता है, देन यू विल हैव टू फाइल फॉर्म VL4. So these forms were notified by the Insolvency and Bankruptcy Board of India with effect from 28th June 2024. Before that, these were not in force. नो एडवांटेजेस ऑफ फाइलिंग फॉर्म VL1 टू VL4. पहले हमें मेल्स करनी पड़ती थी, सब कुछ करना, वो सब अब दैट हैज गॉन, दैट हैज बीन टेकन अवे विद बाय द Insolvency and Bankruptcy Board of India. Boosting the efficiency and effectiveness of VLP, definitely these are the timelines given in the forms, और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम फाइल करते हैं, देन the boosting the efficiency and effectiveness वो आती है. Allowing liquidators to conveniently access and submit forms online, reducing delays and enhancing efficiency, decreasing the chances of errors,
and omissions, ensuring more accurate and reliable information. So these, because every information you have to fill in these forms, and there is a you can say negligible chance of any error. So this is a good step by the IBPI. Now liquidation commencement date is what? किस ठीक है, दिन से ओके, हम बाय। लाइट खोल दो। क्या इंक्वायरी करी? So liquidation commencement Sorry for date. the interruption, sir. No, no issue, sir. Please. Liquidation commencement date. किस दिन से liquidation commence माना जाएगा? Now, subject to the approval of the creditors by 2/3 in value, the liquidation shall be deemed to have commenced from the date of passing of the resolution. Means from the date, in case if the company is having creditors, then from the date of passing of the resolution by the creditors. If the company doesn't have the creditors, then the date from which on which the company has passed, or the LLP or any other institution has passed the resolution or special resolution, as the case may be. जिस दिन भी आपका स्पेशल रेजोल्यूशन या सिंपल रेजोल्यूशन एज पर रिक्वायरमेंट जब भी फाइल पास हुआ, वो डेट आपकी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लिक्विडेशन मानी जाएगी। और जिस दिन अगर क्रेडिटर्स हैं कंपनी में, तो जिस दिन क्रेडिटर्स अप्रूव करेंगे वो उस दिन से वो आपका लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट माना जाएगा। Now, some of the provisions of the liquidation are also applicable upon the voluntary liquidation. Application of Chapter 3 and Chapter 7. Provisions of Section 35 to 53. These provisions are relating to the liquidation process of Chapter 3, and provisions of Sections 68 to 77 of Chapter 7. Offences and penalties shall apply to voluntary liquidation with such modification as may be necessary. So these provisions are also applicable upon the voluntary liquidation process wherever they are applicable, with such modification as may be necessary. Right? Now, effect of liquidation. Regulation 4 says that corporate person shall cease to carry on its business from the liquidation commencement date except for beneficial winding up of its business. So the on the liquidation commencement date, the corporate person will cease to carry on the business. उस दिन से वो business आपका बंद हो जाएगा, बट एक्सेप्ट फॉर बेनिफिशियल फॉर द वाइंडिंग अप के लिए बेनिफिशियल जो बिजनेस है वो आप कैरी कर सकते हो। जस्ट लाइक आपने क्रेडिटर्स डेटर से पैसा लेना है तो वो तो आप ले ही सकते हो, ठीक है ना। तो वो उसके पर्पज के लिए आप बिजनेस या कोई कोई प्रोसेस है, कोई ऐसा जो आप बीच में नहीं रोक सकते तो उसको पूरा करना है, तो वो पूरा कर सकते हो आप। तो सीपी शैल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अनटिल इट इज डिसॉल्व्ड, ये ध्यान रखना। सीपी जो है ना, लिक्विडेशन, जिस दिन लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट को लिक्विडेट नहीं होती है, वो किस दिन डिसॉल्व होती है? डिसॉल्व नहीं होती है। डिसॉल्व कब होती है? when the dissolution order that has come and dissolution order has been filed with the registrar of companies as well as IBBI, तो उस दिन वो कंपनी डिसॉल्व मानी जाएगी उस डेट से। अंडर सेक्शन 59 सबसेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि सीपी शैल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अंटिल इट इज डिसॉल्व्ड। और वो डिसोल्यूशन ऑर्डर कैसा होता है? वो ऐसा होता है, मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जो मैंने कंपनी डिसॉल्व की थी। तो कंपनी का जो स्टेटस है ना, वो आएगा एक्टिव स्टेटस नहीं आएगा, स्ट्राइक ऑफ नहीं आएगा, आएगा डिसॉल्व्ड अंडर सेक्शन 59 सबसेक्शन 8। So this status comes after when you file the liquidation order of NCLT with the registrar of companies in form INC 28. I'll discuss later on how it is to be filed. Now, appointment of liquidator, Regulation 5. Regulation 5 says that appointment of liquidator is must for liquidation of the company through voluntary liquidation. So, corporate person shall appoint insolvency professional as liquidator by passing the resolution, and may be replaced by appointing another insolvency professional as liquidator by passing the resolution. So, corporate person shall appoint insolvency professional as liquidator by passing the resolution. Who will pass the resolution? Resolution will be passed by the shareholders. So, special resolution या ordinary resolution, this is as per the requirement. The resolution appointing insolvency professional shall contain the terms and conditions of appointment and remuneration payable to him. So these are to be mentioned in the resolution for appointing the
liquidator, and the remuneration payable to the insolvency professional liquidator shall form part of the लिक्विडेशन कॉस्ट. सो लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट होगा. लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट जब इसमें एज पर रेगुलेशन 7 सेज कि लिक्विडेशन का पार्ट होगा, लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट होगा, तो इट मींस उसकी जो पेमेंट है दैट विल बी एज पर सेक्शन 53 वाटरफॉल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली उसकी जो पेमेंट पहले होगी, फर्स्ट होगी लिक्विडेशन कॉस्ट. अगर ये ऐसा नहीं लिखा होता रेगुलेशंस में देन दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ द लिक्विडेशन कॉस्ट. और उसकी पेमेंट कैसे होगी दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन. And that would have been a big question. But now it is written, so your as liquidator, your remuneration is safe. IP shall intimate IBBI about his appointment within 7 days. So insolvency professional shall intimate his appointment as liquidator to the Insolvency and Bankruptcy Board of India within 7 days. Earlier it was 3 days. Now with effect from 5th April 2022, now the time limit has been increased to 7 days. No eligibility of the insolvency as liquidator. लिक्विडेटर एलिजिबल है या नहीं है, उसकी एलिजिबिलिटी कैसे देखी जाएगी. रेगुलेशन 6 सेज आईपी एंड एवरी पार्टनर और डायरेक्टर ऑफ आईपी एंटिटी must be independent of CP. Means there should not be any relationship with the corporate person. फाइनेंशियल एज वेल एज पर्सनल कोई भी रिलेशन कंपनी के साथ आपका नहीं होना चाहिए. ओनली देन यू कैन बी अपॉइंटेड एज द लिक्विडेटर ऑफ दैट कंपनी. टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है? टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इज नंबर 1, he must be eligible to be appointed as independent director on the board of the corporate person under section 149 of Companies Act 2013. So this is the first test of independence. Second is he should not be a related party to the corporate person. And related party definition is given under section 5 subsection 24 and 24A of IBC. And has not been an employee, proprietor, partner of a firm of auditor, secretarial auditors or cost auditors of the corporate person. उनका कोई भी एम्प्लॉई नहीं होना चाहिए, प्रोप्राइटर नहीं होना चाहिए, पार्टनर नहीं होना चाहिए. मीन्स अगर कोई भी फर्म ऑफ ऑडिटर है, सेक्रेटरियल ऑडिटर है, कॉस्ट ऑडिटर है, उनका कोई भी एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर आपका लिक्विडेटर नहीं बन सकता. तो he should not have this of he will be treated as disqualified if that person is partner, proprietor or employee. In case of legal or consulting firm, legal or consulting firm है and that has or had any transaction with the corporate person contributing 10% or more of the gross turnover of such firm at any time in last 3 years, at any time, किसी भी टाइम पे अगर आपकी 10% या उससे ज्यादा ग्रॉस उसका 10% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर अगर आपकी टोटल कोई भी ट्रांजैक्शन उनके साथ है देन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड टू बिकम एज लिक्विडेटर ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन. Now eligibility for appointment of liquidator. If IP or IP entity of which he is a partner director is not restrained by the order of the board. अगर कोई IP या IP entity है whose of which he is a partner or director and he is not restrained by the order of the board. If the board means IBBI, if IBBI by order restrain a person to become a liquidator, then that person will not be appointed as, and that person will not have the eligibility to be appointed as the liquidator. Otherwise, that person can be appointed as liquidator. Liquidator shall disclose the existence of any pecuniary or personal relationship with the corporate person or any of its stakeholders as soon as he becomes aware of it to the Insolvency and Bankruptcy Board of India and to the Registrar of Companies. तो जैसे उसको आया, समझ में आया कि मेरा रिलेशन कोई भी मेरी कोई भी रिलेशनशिप अगर मेरा पेक्यूनरी और पर्सनल अगर मेरा कॉर्पोरेट पर्सन के साथ है या किसी भी स्टेक होल्डर के साथ है तो वो इमीडिएटली ही विल डिस्क्लोज टू द IBBI and to the Registrar of Companies. And the IP shall not continue as liquidator if IPE of which he is a director or partner or any other partner or director of such insolvency professional entity
रिप्रेजेंट्स इन एनी स्टेक होल्डर द सेम लिक्विडेशन में किसी भी और स्टेक होल्डर को अगर कोई भी आपका आपके आईपी का कोई भी पार्टनर है या डायरेक्टर है अगर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देन दैट आईपी और आईपी एंटिटी जो है ना वो आईपी कंटिन्यू नहीं करेगा एज लिक्विडेटर, बिकॉज दैट विल बी दैट विल हैव अ यू कैन से रिलेशनशिप विद द कॉर्पोरेट पर्सन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में वो आ जाएगा। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्ट अगर रिलेटेड पार्टी है देन दैट पर्सन कैन नॉट बी द लिक्विडेटर ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन। नाउ आफ्टर अपॉइंटमेंट एज लिक्विडेटर, फर्स्ट स्टेप इज टू make a public announcement in Form A, Schedule 1 as per Regulation 14. 14, तो liquidator shall make a public announcement within 5 days। तो कहीं पे 7 days लिखा हुआ है, कहीं पे 5 days लिखा हुआ है, तो you will have to please keep in mind these timelines। विद इन 5 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एक पब्लिक अनाउंसमेंट होगी। कहाँ पे होगी वो? इन टू न्यूज पेपर्स, वन इन इंग्लिश and one in regional language in wide circulation at the location of the registered office। तो एक तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे जो भी आपका जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में और दूसरा रीजनल लैंग्वेज है, पंजाब है तो पंजाबी, गुजरात है गुजराती, अब हरियाणा है तो हिंदी, जो भी लैंग्वेज है, तमिल अगर तमिलनाडु है तो तमिल लैंग्वेज, वट एवर जो भी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज है, एक उसमें और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में। एक तो वहां पे आपका पब्लिकेशन होगा। सेकंड पब्लिकेशन कहाँ पे होगा? एंड वर्ड लिखा हुआ, एंड प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन। जो भी प्रिंसिपल ऑफिस है, कई बार कॉर्पोरेट ऑफिस कंपनी बना लेती है कि हमारा सारा बिजनेस यहाँ से चलेगा जी, रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा कहीं और है, प्रिंसिपल ऑफिस हमने या कॉर्पोरेट ऑफिस हमने कहीं और बना रखा है। तो प्रिंसिपल ऑफिस पे भी वो एडवर्टीजमेंट इन दो बोथ लैंग्वेजेस, इंग्लिश एज वेल एज रीजनल लैंग्वेज, एंड एनी अदर लोकेशन, और कोई भी और जो कोई और लोकेशन है वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द लिक्विडेटर दिस सीपी कंडक्ट्स मटेरियल बिजनेस ऑपरेशंस। तो मटेरियल बिजनेस ऑपरेशंस जहां भी कैरी कर रही है, कहीं और कर रही है मटेरियल बिजनेस ऑपरेशंस, फैक्ट्री सपोज चेन्नई में है, रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, कॉर्पोरेट ऑफिस गुड़गांव में है, तो तीनों जगह पे वो पब्लिक अनाउंसमेंट होगी इन इन टू लैंग्वेजेस, वन इन इंग्लिश एंड द लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया। पर्पस क्या है सर? पर्पस है कि जितने भी वहां पे क्लेमेंट्स हैं, वो क्लेमेंट्स दे मस्ट कम टू नो दैट कंपनी हैज गॉन इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन एंड वी विल हैव टू फाइल आवर क्लेम्स विद द लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी ऑन द वेबसाइट ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन। कॉर्पोरेट पर्सन की अगर कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट पे भी आप हमें ये पब्लिक अनाउंसमेंट्स करनी पड़ेंगी, एंड एनी अदर वेबसाइट designated by the बोर्ड फॉर दिस पर्पस। बोर्ड मीन्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कोई भी अगर वेबसाइट डेजिग्नेट की है बोर्ड ने तो पानी देना ऑन वेबसाइट डेजिग्नेटेड बाय द बोर्ड फॉर दिस पर्पस, अगर कोई है तो उस पर भी आपको इसको पब्लिक अनाउंसमेंट को करना पड़ेगा। द पर्पस ऑफ द अनाउंसमेंट आई हैव आल्सो डिस्कस्ड, कॉल द स्टेक होल्डर्स फॉर सबमिशन ऑफ देयर क्लेम्स एज ऑन द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। तो लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट को जो भी आपके क्लेम्स हैं यू विल हैव टू फाइल विद द लिक्विडेटर। Now, in that public announcement in Form A, there is providing there is you will have to provide the last date for submission of the claim, which shall be 30 days from the लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। तो लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से 30 डेज के अंदर आपको डेट देनी पड़ेगी 30 डेज की। विद इन दिस डेट यू विल हैव टू फाइल योर क्लेम्स विद मी। Now, after public announcement, I have discussed that you will have to file Form VL1 with the Insolvency and Bankruptcy Board of India. Now, how VL1 form will be filed? VL form VL1 includes details of corporate debtors and details of voluntary liquidation process. Now, VL1 is to be filed at the IBBI website on or before 10th day of the second month after the public announcement। पब्लिक अनाउंसमेंट जिस दिन करी आपने उसके नेक्स्ट मंथ की 10th डे से पहले पहले आपको इसको IBBI की साइट पे फाइल करना है। कैसे करना है? आफ्टर लॉग इन एट द IBBI साइट, आफ्टर लॉग इन एट द IBBI साइट, गो टू डैशबोर्ड, go to dashboard, select
VL forms, fill reason for VL, voluntary liquidation, and liquidation commencement date. And then after that select VL1 form and start filling VL1 form. Simple, जो भी इसमें जो भी requirements हैं वो सारी fill करिए and submit that form to the IBBI and your compliance is done. Now, after making publication, 30 days you are free. 30 days तक आप free, but within these 30 days you will have to make certain compliances. One is notice to the concerned assessing officer under section 178 of the Income Tax Act 1961. It is not written in the liquidation process regulations, but other जो भी sections other applicable हैं, I have tried my level best to include those compliances in my PPT. So notice to concerned assessing officer. So in case of liquidation, notice of appointment is to be given to the concerned assessing officer within 30 days of the appointment. So you will have to give notice to the notice of your appointment to the concerned assessing officer with which the company is to whom the company is being assessed. Within 3 months, assessing officer shall notify the amount of tax payable by the company. Right? वो notify करेगा कितना amount of tax आपको pay करना है. Liquidator cannot part with any assets of the company without prior permission of the principal CCID, Chief Commissioner of Income Tax, Chief Commissioner of Income Tax, Principal Commissioner of Income Tax और Commissioner. उनकी परमिशन के बिना आप कोई भी एसेट्स को सेल आउट या डिस्पोज नहीं कर सकते. Any contravention of the above provisions, liquidator shall be personally liable to pay tax of the company. So you will have to keep in mind these provisions, but these provisions are applicable in case of liquidation. But in case of voluntary liquidation, the IBC, the liquidation means liquidation under the Companies Act 2013. The first provisions are, these provisions are applicable. But in case of voluntary liquidation or liquidation under IBC, the provisions of this section shall have effect, notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the timing in force, except the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. This is written under section 178 subsection 6. के provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code पे ये provisions जो भी हैं section 178 के, they are not applicable. But on other liquidation, means liquidation under the Companies Act 2013, they are applicable, but not the liquidation under IBC. Right? एक जनरल सर्कुलर आया था on 15th November 2021, and that says then that as per the provisions of the code and regulation read with section 178 of the Income Tax Act 1961, an insolvency professional handling voluntary liquidation process is not required to seek any no objection certificate or no due certificate from the income tax department. तो कई बार हमें लगता है ना कि सर कल को वहां से कोई लायबिलिटी आ गई, कल को वहां से कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हमें वहां से एनओसी एनडीसी लेना जरूरी है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. सो दीज वर द क्वेरीज ऑफ द liquidators. So IBB has clarified through its general circular dated 15th November 2021 that you are not required to take any NOC or no due certificate from the income tax department as a part of the compliance in the said process. Now, within 30 days, you will have to complete the books of accounts of the corporate person if they are not completed. And you will have to maintain registers and books of registers also, which are required to be maintained under regulation 10. कौन से हैं? Books of accounts of CP are complete. If they are incomplete, the liquidation commencement on the liquidation commencement date, the liquidator shall have them completed with all convenient speed at the earliest possible. लिक्विडेटर को वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंप्लीट करना पड़ेगा. एंड लिक्विडेटर शैल कीप द रिसीट ऑफ ऑल पेमेंट्स मेड और एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम. कोई भी अगर आप पेमेंट कर रहे हो
को तो आपको सारी रसीद जो है ना रखनी पड़ेगी, या कोई एक्सपेंस कर रहे हो तो यू विल हैव टू कीप ऑल द, बिकॉज द योर द वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस जो ऑडिट है, यू विल हैव टू डन गेट इट डन फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपसे उससे कराना पड़ेगा, दैट विल बी अनेक्स्ड विद योर एप्लीकेशन फॉर डिसोल्यूशन विद द एनसीएलटी। So these are the registers which are required to be maintained by the liquidator. Cash book, ledger, bank ledger, register of fixed assets and inventories, securities and investment register, register of book debts and outstanding debts, tenants register, suits register, decree register, register of claim and dividends, contributories ledger, distribution register, fee register, suspense register, documents register, books register, register of unclaimed dividend and undistributed proceeds, such other books and registers as may be necessary to account for the transactions entered into by him in relation to the corporate person. So all the aforesaid registers and books are maintained in the form Schedule 2. Schedule 2 में सारे forms इनके दिए हुए हैं कि how you है, किस format में आपको इनको maintain करना है। तो you will have to maintain accordingly these registers and books of accounts. Now, you may engage some professionals if you require. If you think that I need these professionals for the voluntary liquidation process, so you can appoint those professionals under Regulation 11. So, so liquidator may engage professionals to assist him at the reasonable remuneration. रीजनेबल exorbitant नहीं होना चाहिए रेमुनरेशन कोई भी, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द वर्क असाइन टू दैट प्रोफेशनल, एंड सच रेमुनरेशन शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द लिक्विडेशन कॉस्ट, और उसका जो भी रेमुनरेशन होगा दैट विल बी पार्ट ऑफ द लिक्विडेशन कॉस्ट एज पर रेगुलेशन 7। लिक्विडेटर शैल नॉट एंगेज अ प्रोफेशनल, लिक्विडेटर जो है वो इस किसको एंगेज नहीं करेगा, हु इज हिज रिलेटिव, अपने रिलेटिव को भी वो कंपनी के अंदर एज प्रोफेशनल एंगेज नहीं करेगा, रिलेटेड पार्टी ऑफ सीपी को भी नहीं करेगा, और हैज सर्व्ड एज एन ऑडिटर ऑफ द सीपी, जो सीपी का ऑडिटर है जिसने सर्व किया एज ऑडिटर ऑफ द सीपी, उसको भी एट एनी टाइम ड्यूरिंग दी 5 ईयर्स, पिछले 5 साल में जो भी कंपनी का ऑडिटर रहा है उसको भी आप एज प्रोफेशनल एंगेज नहीं कर सकते प्रेसिडिंग दी लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। प्रोफेशनल एंगेज्ड और प्रपोज टू बी एंगेज्ड शेल डिस्क्लोज, जो भी प्रोफेशनल एंगेज किए हैं वो क्या करेंगे, अपना डिस्क्लोज करेंगे, व्हाट दे विल डिस्क्लोज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पेक्यूनरी और पर्सनल रिलेशनशिप, कोई भी पेक्यूनरी और पर्सनल रिलेशनशिप है स्टेक होल्डर के साथ या कॉर्पोरेट पर्सन के साथ, कोई भी स्टेक होल्डर है तो वो किसके साथ भी है तो वो अपना वो डिस्क्लोज करेंगे पहले ही और बाद में एज सुन एज दे बिकम अवेयर ऑफ इट। तो आप सपोज अपॉइंट कर लिया, बाद में पता लगे नहीं मैं तो इस स्टेक होल्डर के साथ या सीपी के साथ मेरा कोई रिलेशनशिप है, दे विल इमीडिएटली डिस्क्लोज टू द लिक्विडेटर। नाउ कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स, सो आप एज लिक्विडेटर आपको कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग्स करनी पड़ सकती हैं। तो सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 सेज दैट liquidator has power to consult any stakeholder entitled for distribution of proceeds under section 53। जो कोई भी stakeholder है who is entitled to receive the distribution of proceeds during after the liquidation under section 53, वो उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं। Stakeholder consulted under section 35 subsection 2 shall extend all assistance and cooperation to the liquidator। liquidator को सारी assistance और cooperation वो stakeholder वो सारी provide करेगा, extend करेगा to complete the liquidation of the corporate person, and liquidator shall maintain the particulars of consultation। consultation जो भी आपने की है उसके सारे particulars आपको maintain करेंगे with the stakeholders, so you can prepare the minutes of the meeting with the stakeholders। So all particulars will be maintained in those minutes, and and the compliance will be done. So there may be some extortionate credit transactions under Regulation 30. You will have to see these transactions also during these 30 days period. Extortionate credit transaction under Section 50 means where terms of receiving financial and operational debt, जो कंपनी ने कभी भी फाइनेंशियल डेट लिया है या ऑपरेशनल डेट लिया है
पिछले 2 साल में, प्रेसीडिंग 2 years इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से, देन या लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से, देन रिक्वायर दी सीपी टू मेक एग्जॉर्बिटेंट पेमेंट्स। और उसमें आपने आपने कोई भी उसकी जो टर्म्स हैं, रिसीविंग दी फाइनेंशियल डेट्स या ऑपरेशनल डेट, वो 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 रिक्वायर करती है सीपी को टू मेक एग्जॉर्बिटेंट पेमेंट्स in respect of financial or operational debt. So that will be called extortionate credit transaction and are unconscionable, means these are exorbitant under the principle of law relating to contracts also. उसके अकॉर्डिंगली ये जो है ना बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी पेमेंट अगर ऐसी है और टर्म्स उसकी टर्म्स फाइनेंशियल और या ऑपरेशनल डेट की कोई भी टर्म ऐसी है जिससे ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं हम उनको, मीन्स वी आर फेवरिंग सम पर्सन, द पर्संस हु हैव गिवन अस द फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेट फॉर एनी रीजन, तो दैट विल कम अंडर द एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन अंडर रेगुलेशन 30। Section 50 subsection 2 says the board may specify the circumstances in which the transaction shall be covered under section 50 subsection 1. The board will also specify these circumstances. Any debt extended, but any debt extended by any person providing financial services, कोई भी financial service provide कर रहा है, उसने कोई अगर debt दिया है which is in compliance with the law for the timing in force, जो compliance of law के accordingly है, compliance कर रहा है, then in relation to that shall in no event be considered as an extortionate credit transaction. So if any transaction is law compliant, then that will not be treated as extortionate credit transaction, otherwise that will be treated as extortionate credit transaction. Now आपने पब्लिश कर दिया न्यूज़पेपर में, राइट, और आपने सबको बैंक, वन थिंग आई विल आल्सो डिस्कस विद यू दैट व्हेन यू विल give notice to the income tax department of your appointment, you will have to give notices of your appointment to other persons means to the banker of the company। बैंकर ऑफ द कंपनी को आप नोटिस देंगे, या जो भी डिपार्टमेंट्स, जो भी स्टेचुटरी डिपार्टमेंट्स जो है ना कंपनी को डील कर रहे थे, सभी को आप जो है ना नोटिस देंगे दैट आई हैव बीन अपॉइंटेड एज लिक्विडेटर, द कंपनी हैज गॉन इनटू लिक्विडेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस, and I have been appointed as the liquidator. You please let me know if you have any objection or if you have any claim to be filed against this corporate person. So now how the all the creditors, all the persons who are stakeholders of the company, they will file their claims. So chapter 5 of the voluntary liquidation process regulations, this deal with the claims, regulation 15 to 19. Person who claims to be stakeholder shall prove his claim for debt or dues to him, including interest, if any, on the liquidation commencement date. So आपको जो जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो अपना जो क्लेम है वो प्रूव करेंगे कौन सी डेट को, लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट को। लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट मीन्स on the date on which the corporate person has passed the special resolution or the resolution as the case may be, or the corporate person has got the approval from the creditors, so that will be the liquidation commencement date। उस डेट को जो भी आपका डेट है या ड्यूज है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वो आप कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद का नहीं, वहीं तक का आप क्लेम करके देन दे कैन फाइल अ क्लेम विद द लिक्विडेटर। Now proof of claim to be sent in the following manner. Proof of claim कैसे होगा? In case of operational creditor other than workman or employee और workman के को छोड़ के only operational creditors, they will submit their proof of claim to the liquidator in person, means by hand, by post, speed post or registered post, by electronic means by electronic means वो कोई भी हो सकता है, by email, by WhatsApp या जो भी आपका कोई और अदर मोड है। In form B, form B is given, form A is for public announcement, form B is for claim to the operator, claim by the operational creditors other than workman or employee। In case of financial creditors, the form is C of schedule 1 and और ये कैसे फाइल करेंगे? Only in electronic means। Financial creditor will file their claim to the liquidator only in electronic means।
नाउ इन केस ऑफ वर्कमैन और एम्प्लॉय, मैंने कहा था एक्सेप्ट वर्कमैन ऑफ एम्प्लॉय, तो वर्कमैन और एम्प्लॉय कैसे अपना क्लेम फाइल करेंगे? दे विल सबमिट देयर प्रूफ ऑफ क्लेम इन फॉर्म डी ऑफ शेड्यूल 1, again by person, it means by hand, by post, speed post, registered post, or by electronic means under regulation 18. इन केस ऑफ न्यूमरस वर्कमैन और एम्प्लॉय, और बहुत सारे वर्कमैन और एम्प्लॉय हैं, 150 200 300 वर्कमैन हैं या एम्प्लॉयज हैं, दे हाउ दे विल फाइल देयर क्लेम? दे विल फाइल देयर क्लेम थ्रू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, एंड द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में सबमिट वन प्रूफ ऑफ क्लेम फॉर ऑल। सबके लिए एक ही प्रूफ ऑफ क्लेम वो करेगा अप्लाई इन फॉरम ई ऑफ शेड्यूल 1। पर्सन क्लेमिंग टू बी दी स्टेक होल्डर्स अदर देन अफोर्सड, इनमें से कोई भी नहीं है, तो जो बचे हुए हैं वो यहाँ पे फॉर्म एफ में अपना सबमिट करेंगे प्रूफ ऑफ क्लेम टू दी लिक्विडेटर, अगेन इन पर्सन, बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। नो बेसिस ऑफ प्रूफ ऑफ क्लेम्स क्या होगा, कैसे वो अपना अपना अपने क्लेम को प्रूव करेंगे? इन केस ऑफ ऑपरेशनल क्राइटेरिया, रिकॉर्ड अवेलेबल विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में अगर कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है तो वो रिकॉर्ड अपना वो साथ में फॉर्म, जो उनका फॉर्म ऑपरेशनल क्रेडिटर का फॉर्म क्या था, फॉर्म बी, राइट। फॉर्म बी में वो अपना वो उसका इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास अगर कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है उनका तो वो फाइल करेंगे। तो मेरे से ना पीछे क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में क्या ऑपरेशनल क्राइटेरिया कैसे वहां से अपना लेंगे, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में क्या मैंडेटरी है इंफॉर्मेशन देना? तो सेक्शन 215 सेक्शन सबसेक्शन 2 says that financial creditors shall file their information with the information utility, and section 215 subsection 3 says that the operational creditors may file their information to with the information utility of their debt, their claim, of their जो भी उन्होंने पैसा लेना है कंपनी से। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए वर्ड यूज किया उन्होंने शेल, और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के लिए वर्ड यूज किया मे। तो इट मींस ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के लिए ऑप्शनल है, बट इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स उनके लिए मैंडेटरी है। तो वो अपनी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में जो भी उनका अवेलेबल, जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग देयर डेट, दे विल फाइल देयर with the information utility. So if the record is available with the information utility, that will be annexed with the by the operational creditors along with the proof of claim. Otherwise, that is not required. Second, contract of for supply of goods और सर्विसेज विद दी कॉर्पोरेट पर्सन। कॉर्पोरेट पर्सन के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स वो लगाएंगे, सर्विसेज का कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो लगाएंगे, अलॉन्ग विद इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट फॉर द सेम टू द सीपी। तो नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल दैट हैज एडजुडिकेटेड अपॉन नॉन पेमेंट ऑफ डेट। कोई ट्रिब्यूनल या कोर्ट का कोई ऑर्डर है जिसमें लिखा हुआ है कि ये उन्होंने एडजुडिकेट कर दिया कि दिस डेट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड, एंड दैट डेट हैज नॉट बीन पेड ऑन द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, टिल द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, तो वो आप कोर्ट का ऑर्डर भी लगा सकते हो, दैट विल बी अ सफिशिएंट प्रूफ। फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन, कॉर्पोरेट पर्सन का फाइनेंशियल अकाउंट्स का मीन्स आपने कोई लेजर कहाँ से आया है आपके पास जिसमें उन्होंने एडमिट किया है कि दैट दिस इज योर लेजर इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वी हैव टू पे अकॉर्डिंगली। तो वो उसको एडमिट कर रहे हैं कि वी हैव टू पे दिस अमाउंट टू यू, सो यू कैन एनेक्स दीज डॉक्यूमेंट्स इन केस इफ यू आर अ ऑपरेशनल क्रेडिटर। इफ यू आर अ फाइनेंशियल क्रेडिटर देन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी annexed with the claim, proof of claim. Number one, records available with the information utility. Second, financial contract supported by the financial statements. Financial contract, if the financial creditor has any financial contract, in most of the cases, financial creditors they have the financial contract and supported by financial statements that we have paid these these financial statements of the financial creditor that we have paid this amount to the corporate person on these dates. So you will have to annex those financial statements with the proof of claim. Record evidencing that amount committed by the financial creditor to the CP under the facility has been drawn by the CP. के जो सीपी ने आपके आपके जो है ना आपके अकाउंट से पैसा
लिया है, हमने पैसा दिया है और हमने उन्होंने पैसा हमारे से लिया है, तो अपनी आपकी बैंक बैंक स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं साथ में, इन इन एज अ प्रूफ ऑफ क्लेम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग दैट डेट हैज नॉट बीन रीपेड, सो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी लगाएं दैट टिल डेट द डेट दैट हैज नॉट बीन रीपेड, एंड द order of the court or tribunal that has adjudicated upon the non payment of debt if any। तो ये भी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं एज प्रूफ ऑफ क्लेम इफ यू आर अ फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन। Now, in case of workman or employee, records available with the information utility, proof of employment such as contract of employment means appointment letter, अगर आपके पास कोई है appointment letter, notice demanding the payment, if you have given any notice to the corporate person and you have demanded the money from the your payment from the corporate person, or any other proof that payment has not been made, कोई भी अगर proof आपके पास कोई और है that the corporate person has not made payment up to you, then you can also annex that a proof of claim along with the proof of claim. Order of the court or tribunal that has adjudicated upon the non-payment of debt, if any. So these documents you can annex with the proof of claim, with the form as proof of claim. Liquidator shall admit the claims of workman or employee on the basis of books of accounts of CP if the workman or employee has not made the claim. So this facility is also given in the regulations that if the workman or employee, I think this regulation has been made due to the reason that most of the workmen, they are not literate, they are not well versed about the provisions of the law, and so a liquidator can admit the claims of the workmen or employees on the basis of books of accounts of the corporate person if such workmen or employees they have not been paid, and they have not made claim to the liquidator का उन्होंने कोई क्लेम नहीं किया, तो on the basis of books of account, जो भी books of accounts में उनका पैसा बनता है, तो that the liquidator will admit the claims accordingly. Now in case of other stakeholders, जो अदर स्टेक होल्डर्स के केस में हमारा फॉर्म एफ था ना, तो फॉर्म वो क्या लगाएंगे, कोई भी अदर स्टेक होल्डर्स हैं, record available with the information utility same, this is the common. Second is documentary evidence of the notice demanding payment of unpaid amount, कोई भी आपने नोटिस दिया है डिमांडिंग पेमेंट, या बैंक स्टेटमेंट ऑफ द क्लेमेंट शोइंग दैट द क्लेमेंट हैज नॉट बीन पेड along with the affidavit is required in that case, that documentary evidence जो भी आपने बैंक स्टेटमेंट साथ में लगाई है, they are true, valid and genuine. ये this is required in case of other stakeholders. Documentary or electronic evidence of his shareholding. अब ये this is very interesting that क्या अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या शेयर होल्डर्स को भी अपना क्लेम फाइल करना है? यस, दे विल हैव टू फाइल देयर क्लेम along with the share certificates, original share certificates in form F. वो ये एविडेंस करेगा दे आर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। जो आप शेयर होल्डर्स की लिस्ट आप बनाते हो उसके साथ आप उसको मैच करोगे वेदर दिस पर्सन इज होल्डिंग दिस मच ऑफ शेयर्स और नॉट, बिकॉज after making the payment to all the debt creditors, whatever remains that will be distributed among the shareholders. तो shareholders को कैसे आप उसको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना, आइडेंटिफाई करने के लिए they will file their claim in form F along with the original share certificates that we are the shareholders, that I am the shareholder of the company, जो भी बनेगा मेरा जो है ना, please make the payment to me. Order of the court or tribunal that has adjudicated upon the non-payment of debt. These first A and D, these are the common in all, and rest are the as per the requirement. Now, proof of security interest. Regulation 20 says if there is any security interest, if there is any security interest, then existence of security interest may be proved by the secured creditor on the basis of record available with the information utility, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास अगर कोई चार्ज है तो वो,
अब in this case, अब nowadays 120 days is given for registration of charge. After 120 days, the your charge cannot, you cannot register your charge with the registrar of companies. Then what to do? Then proof of registration of charge with CERSAI, Central Registry of Securitization, Asset Reconstruction and Security in Trust of India. So you can also uh, get your charge registered with the CERSAI, right? Other relevant documents which adequately establish the security interest. If अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज नहीं है, proof of registration of charge नहीं है, then other relevant documents means the contracts, the agreements, hypothecation agreements हैं, वो आप जो भी adequately establish करें कि आपका security interest जो है ना, आपका जो भी आपका लोन है, ये जो भी डेटा दैट इज सिक्योर्ड, so you can annex these documents with the with your form proof of claim as proof of claim. Now in production of bill of entry and promissory note, और bill of entry कोई देता है या कोई promissory note देता है, तो what he will do? Proof a debt in respect of bill of exchange, promissory note or other negotiable instrument or security of a like nature for which CP is liable, जिसके लिए सीपी लायबल है पे करने के लिए, सच इंस्ट्रूमेंट शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द लिक्विडेटर बिफोर द क्लेम इज एडमिटेड, राइट? तो क्लेम जो लिक्विडेटर है उसके सामने आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे. सब्सटेंशिएशन ऑफ क्लेम, लिक्विडेटर में कॉल फॉर सच अदर एविडेंस और क्लैरिफिकेशन एज डीम फिट फ्रॉम द क्लेमेंट फॉर सब्सटेंशिएटिंग द होल और द पार्ट ऑफ द क्लेम. सो फॉर सब्सटेंशिएशन ऑफ द क्लेम, अगर लिक्विडेटर कोई और एविडेंस, कोई और डॉक्यूमेंट, कोई और क्लैरिफिकेशन आपसे मांगता है, तो यू विल हैव टू प्रोवाइड दैट टू द लिक्विडेटर सो दैट लिक्विडेटर कम टू नो कि यस दिस इज द डेट विच द कंपनी हैज टू पे. कॉस्ट ऑफ प्रूफ ऑफ क्लेम. अब प्रूफ ऑफ क्लेम की जो कॉस्ट है, हु विल बियर? द क्लेमेंट शैल बियर द कॉस्ट ऑफ प्रूविंग इट्स क्लेम. जो क्लेमेंट है वो बियर करेगा कॉस्ट को, अपने कॉस्ट को प्रूव करने के लिए, अपने क्लेम को प्रूव करने के लिए. Cost for verification and determination of the claim incurred by the liquidator shall be part of the liquidation cost. So cost जो verification या determination के लिए कोई भी claim को अगर that is incurred by the liquidator, so that will be part of the liquidation cost that will be reimbursed to the liquidator, right? And if the claim found to be false, अगर किसी का claim false पाया जाता है, in that case the liquidator shall endeavor to recover the cost incurred for verification and determination of the claim. तो वो कोशिश करेगा कि उससे पैसा ये वसूल किया जाए फ्रॉम द सच क्लेमेंट एंड शेल प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द क्लेमेंट टू द बोर्ड. और क्लेमेंट उसकी डिटेल्स क्लेमेंट की उसको बोर्ड को भी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड को भी वो प्रोवाइड करवाएगा, ताकि वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड से भी इस पैसे को क्लेम ना कर सके. क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ अनक्लेम्ड पैसा बच जाता है या अनक्लेम्ड पैसा रह जाता है, कंपनी में क्लेमेंट नहीं आते, तो आपके पास पैसा वो बच जाएगा. व्हाट यू विल डू, आई विल डिस्कस लेटर ऑन, बट आई विल लेट यू नो राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस स्लाइड कि वो पैसा जो है ना आपको आईबीबीए के पास जमा करना पड़ता है. सो इफ द क्लेम ऑफ एनी पर्सन इज फाउंड फॉल्स, तो लिक्विडेटर ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया, बट दैट पर्सन मे क्लेम फ्रॉम द आईबीबीआई, ठीक है ना? तो आईबीबीआई ने भी इसलिए रेगुलेशन में लिखा है कि जो लिक्विडेटर है, जो जो अगर कोई भी क्लेम करता है, आईबीबीआई को डायरेक्ट अप्रोच करता है आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी या बिफोर डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, then IBBI will first send that claim to the liquidator. Please verify this is okay or not. If that is okay, then the IBBI releases the payment. Otherwise, IBBI will not release the payment. So, if any claim is found to be false, then liquidator shall recover the cost from that claimant and also provide the details of the claimant to the Insolvency and Bankruptcy Board of India, so that that claimant could not claim from the Insolvency and Bankruptcy Board of India after the liquidation or before the dissolution or even after the dissolution. The determination of quantum of claim, where the amount claimed by the claimant is not precise.
ड्यू टू एनी कंटिजेंसी, किसी वजह से अगर कोई नहीं उसकी जो क्लेम की जो अमाउंट है वो नहीं, वो प्रिसाइज नहीं है, देन liquidator shall make the best estimate of the amount of the claim based on the consultation with the claimant. क्लेमेंट के साथ वो कंसल्ट करेगा, सीपी के साथ कंसल्ट करेगा, एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद हिम, जो इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है उसको सारी को कंसीडर करके देन ही विल मेक द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ द क्लेम. Now, valuation of debt in foreign currency. If any debt is in foreign currency, then what to do? The claim denominated in foreign currency shall be valued in Indian currency at the official exchange rate of the on the liquidation commencement date. जो liquidation commencement date के ऊपर जो के दिन जो भी ऑफिशियल एक्सचेंज रेट था उस पे इंडियन करेंसी में उस फॉरेन करेंसी को वैल्यू किया जाएगा. और वो एक्सचेंज रेट क्या होता है? रेफरेंस रेट पब्लिश्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और derived from such reference rates. Now, periodical payments, how to be done, how to be made. In case of rent, interest or the other payments, कोई रेंट पे बिल्डिंग है, वो इंटरेस्ट चल रहा है किसी का, देन और या अदर पेमेंट्स है पीरियोडिकल नेचर की, देन व्हाट, द पर्सन में क्लेम ओनली फॉर द अमाउंट्स ड्यू एंड अनपेड अप टू द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट. उसके बाद की वो नहीं कर सकता, उसके बाद की वहीं तक की वो अपनी जो जो भी उसका पेमेंट है वो उससे ले सकता है, लिक्विडिटी से क्लेम कर सकता है. डेट पेबल एट फ्यूचर टाइम. अब कोई डेट है बाद में पे करना है तो वो भी आपको लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट तक वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसका फॉर्मूला रेगुलेशंस में दिया गया है. The formula is x oblique in within bracket 1 plus r oblique n. So this is the formula given in the regulations. You can easily calculate that. And person may prove the claim whose payment was not yet due on the liquidation commencement date is entitled to distribution in the same manner as any other stakeholder. So liquidation commencement date तक वो अपना उसको कैलकुलेट करके क्लेम कर सकता है. Mutual credits are set off. In case of mutual dealings between the CP and the other party, the sum due from one party shall be set off against the sum due from the other to arrive at the net amount payable. मैंने कंपनी का 100 रुपया देना है, कंपनी ने मेरे 70 रुपये देने हैं, तो मेरा सेट ऑफ 70 का सेट ऑफ होकर आई हैव टू क्लेम फॉर ओनली फॉर 30 रुपीज. नो वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम. लिक्विडेटर शैल वेरीफाई द क्लेम सबमिटेड. जो भी विद इन 30 डेज उसके पास जितने भी क्लेम आए तो वो वेरीफाई करेगा कितने कितने टाइम में, विद इन 30 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ द क्लेम. तो लास्ट डेट क्या, अभी 30 डेज लास्ट डेट. तो जब तो तब तक जितने भी क्लेम उसके पास आए वो सारे क्लेम्स को वेरीफाई करके देन उनको पूरे पूरे सारे जितने क्लेम्स आए उनको वेरीफाई करेगा. एंड देन आफ्टर वेरिफिकेशन लिक्विडेटर में इधर एडमिट और रिजेक्ट द क्लेम. एडमिट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, इन होल और इन पार्ट. पूरा भी कर सकता है और पार्ट में भी कर सकता है, एज द केस में बी, एज पर सेक्शन 40 सबसेक्शन 1 ऑफ द कोड. मैंने आपको कहा था ना, सेक्शन 35 to 53 ऑफ चैप्टर 3 आर एप्लीकेबल on the voluntary liquidation process regulations. So these are the provisions which are applicable on the on the voluntary liquidation process. तो सेक्शन 40 में आप एडमिट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो, पूरा और इन पार्ट. एज पर सेक्शन 40, इफ लिक्विडेटर रिजेक्ट्स अ क्लेम, अगर रिजेक्ट करता है, देन ही शैल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर रिजेक्शन इन राइटिंग. प्लीज नोट दैट, रिकॉर्ड द रीजंस इन रिजेक्शन इन राइटिंग. राइटिंग में आपको करना, बाद में तो एनसीएलटी को नहीं कह सकते सर वो तो मैंने ऐसे रिजेक्ट कर दिया था, ये इस वजह से रिजेक्ट कर दिया. नो, यू विल हैव टू रिकॉर्ड इन राइटिंग. मींस आपको उसको जो जो रिजेक्शन है, रिजेक्शन को इन रिटर्न देना है, लिख के कि रीजंस क्या है आपके, व्हाई यू आर रिजेक्टिंग दैट क्लेम. Liquidator shall communicate his decision of the admission or rejection of claim to the corporate to the creditor और the corporate debtor, दोनों को, लिक्विडेटर क्रेडिटर को भी और कॉर्पोरेट डेटर को भी, दोनों को ही अपना कम्युनिकेट करेगा डिसीजन विद इन 7 डेज ऑफ सच एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ द क्लेम. तो जिस दिन भी उसने किया उसके 7 डेज में उसको कम्युनिकेट करना है उसके डिसीजन को, किसको, क्रेडिटर को भी और कॉर्पोरेट डेटर को भी, राइट. Creditor may appeal to the adjudicating authority. If the claim of the creditor is rejected by the liquidator, then
The such creditor may appeal to the adjudicating authority against the decision of the liquidator within 14 days of the receipt of such decision as per section 42 of the code. तो विद इन 14 days द क्रेडिटर में अपील टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कि मेरा ये क्लेम आज रिजेक्ट कर दिया है, मेरा क्लेम एक्सेप्ट या एडमिट कराया जाए। ठीक है। नाउ list of stakeholders, regulation 30 says that liquidator after completing the verification of claim, the liquidator shall prepare the list of stakeholders। तो उसके बाद वो क्या करेगा, लिस्ट ऑफ स्टेकहोल्डर को प्रिपेयर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ ऑफ क्लेम सबमिटेड एंड एक्सेप्टेड विद द अमाउंट ऑफ क्लेम्स एडमिटेड इफ एप्लीकेबल, एक्सटेंड टू विच डेट्स और ड्यूज आर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, कितने सिक्योर्ड है, उसमें से कितने अनसिक्योर्ड है, कितना कितना अमाउंट सिक्योर्ड है और कितना अनसिक्योर्ड है, डिटेल्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स, कौन पूरी डिटेल लिखेगा स्टेक होल्डर, कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं, प्रूफ ऑफ क्लेम एडमिटेड और रिजेक्टेड इन पार्ट और रिजेक्टेड होल, ये सारा एक लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर वो बनेगी। देन लिक्विडेटर शैल प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर विद इन 45 days। ए टाइम पीरियड इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लेम। तो जिस दिन क्लेम आए उसके पास, तो वो उसके 45 डेज में, यानी 30 डेज का टाइम उसका है पब्लिकेशन का, 30 डेज तक उसको वेट करना है क्लेम्स आने का, क्लेम्स आए उसके नेक्स्ट 45 डेज में, मीन्स टोटल 75 days इज गिवन फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। उस डेट तक वो क्या करेगा, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर विद इन 45 days। प्रोवाइडेड दैट वेयर नो क्लेम इज रिसीव्ड, कोई क्लेम ही नहीं आता किसी का भी, टिल द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लेम, liquidator shall prepare the list of stakeholder within 15 days from the last date of receipt of claim। विद इन 15 days, तो 15 दिन में, तो ये मीन्स 30 days प्लस 15 days 45 days। कोई नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं आता, देन वो लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर प्रिपेयर करेगा विद इन 15 days। List of stakeholder as modified from time to time shall be available for inspection by the person who submitted the proof of claim। जो जिन्होंने अपना proof of claim submit किया, they can inspect the list of stakeholders, they can the members, partners, directors or guarantors of corporate persons। So these persons can inspect the list of stakeholders, and that list of stakeholders shall be displayed on the website of the corporate person or the designated by the, or any website designated by the Insolvency and Bankruptcy Board of India for this purpose। So realization of assets, the manner of sale, so how the liquidator shall realize the assets। Liquidator may value and sell the assets of the corporate person in the manner and mode approved by the corporate person in compliance with the provisions, if any, in the applicable statute। तो first liquidator first will value the assets and then he can sell the assets, otherwise he cannot sell the assets without valuation, and valuation is to be done from the from the registered value of the registered with the Insolvency and Bankruptcy Board of India, right? And assets means an asset, all assets, set of assets, parcel of assets, as the case may be in relation to the sale of assets। Now recovery of money due, liquidator shall endeavor to recover and realize all assets of and dues to the corporate person in a time bound manner for maximization of the value for the stakeholders। मीन्स कोई भी एसेट है जो डेप्रिशिएबल है या जो 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 पेरिशेबल है, तो वो इमीडिएट वो उसको जल्दी से जल्दी रिकवर, जल्दी से जल्दी उसको सेल आउट करके और उस मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट एसेट ही विल रिकवर एंड रियलाइज द एसेट इन अ टाइम बाउंड मैनर। तो एट द अर्लीस्ट पॉसिबल ही विल कंप्लीट दिस प्रोसेस। Proceeds of liquidation and distribution, now money to be paid into the bank account। तो जो भी रियलाइजेशन होती है एसेट सेल आउट करने से, liquidator shall open a bank account in the name of corporate person followed by the words involuntary liquidation in a scheduled bank for the receipt of monies ड्यू टू दी कॉर्पोरेट पर्सन। ये एक प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन अब तो कुछ प्राइवेट बैंक हैं जो आगे आए हैं इन वॉलेंटरी लिक्विडेशन अकाउंट खोलने के लिए, बट बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो अकाउंट नहीं खोलते बिकॉज दे नो वेरी वेल दैट दिस अकाउंट इज ओपन ओनली फॉर 30 days, राइट, एंड आफ्टर दैट दिस अकाउंट विल बी क्लोज्ड।
So they don't show any interest in these kind of accounts because these accounts will not be maintained for a long time period of time. But nowadays I have faced a great problem of many, मतलब you can say एक बड़ी अच्छी मेरे को इसमें प्रॉब्लम आई है कुछ जो मेरी जो मैंने वॉलंटरी लिक्विडेशंस कंपनीज की हैं तो लेकिन somehow I have managed to open these accounts. I have also raised this query before the chairman of IBBI that you please write to the Reserve Bank of India and the present account being maintained by the corporate person that be converted into involuntary liquidation account and that the authority of to operate that account be given to the liquidator, and in this way the opening of account by the liquidator that can be waived off. So till now, I think this the regulation has not been changed. But some I have also heard some queries from the members when I was given this lecture in ICSI. Some of the insolvency professionals they say that some of the banks they have started to convert the present account into involuntary liquidation account. And so if these banks have come forward with this facility, then I think there will be a easy for the liquidator to in involuntary liquidation process. Now, liquidator shall pay to the credit of the bank account opened under sub-regulation 1 all the monies including checks, demand draft रिसीव्ड बाय हिम एज अ लिक्विडेटर ऑफ द सीपी। जो भी उसके पास पैसा आता है, कोई भी पैसा चेक आया, कोई डिमांड ड्राफ्ट आया, वो सारे के सारे उस अकाउंट में उसको जमा करने हैं इनवॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट में, राइट। और कब करने हैं जमा? रियलाइजेशन ऑफ ईच डे शैल बी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट विदाउट एनी डिडक्शन। ही कैन नॉट डिडक्ट एनी अमाउंट। जो भी वो एक्सपेंस करता है उसकी रसीद रखेगा, वो लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट बनेगी, बट वो ये नहीं कह सकता जी मैंने एक्सपेंस किया ये तो मैंने काट लिया और बाकी मैंने बैंक में जमा करा दिया। नो, वट एवर यू हैव रिसीव्ड यू विल हैव टू डिपॉजिट द होल अमाउंट विदाउट एनी डिडक्शन नॉट लेटर देन नेक्स्ट वर्किंग डे। नेक्स्ट वर्किंग डे तक आपको उसको पैसे को बैंक में इनवॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट में जमा करना है। Monies in the credit of the bank account shall not be used except in accordance with section 53। जो भी पैसा बैंक में गया है वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा और कहीं आप उसको यूज नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एज पर सेक्शन 53 वाटरफॉल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली all payments above 5,000 rupees shall be made by check, drawn और ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन अगेंस्ट दी बैंक। कोई भी आपने पेमेंट करनी है 5,000 से ऊपर की, वो आपको चेक से करनी है। 5,000 के नीचे की पेमेंट आप कैश से कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन 35 to 36 विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ द अमाउंट यू विल हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट। मीन्स 30 days में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और अकाउंट क्लोज करना है, राइट। अर्लियर इट वॉज 6 months, पहले ये 6 months था, बट फ्रॉम 5th April 2022, the time period has been reduced to 30 days only. Deduction of liquidation cost before distribution, that is you have to do with the approval of corporate person. Distribution of an asset that cannot be readily or advantageously sold due to its peculiar nature। कोई peculiar nature की कोई asset है which cannot be sold advantageously, then you can distribute that asset to the stakeholders or others among the stakeholders, right? Return of money. So if any money has been given to any stakeholders for which he was not entitled, he will return that money immediately to the corporate person or in the involuntary liquidation account or to the liquidator. Now, tax liability. This is the main you can say the main provision which is given under the Income Tax Act. Okay, how the Income Tax Act deal with such liquidation proceedings. As per section 2 subsection 22C of the Income Tax Act 1995, any distribution made to the shareholders of a company on its liquidation to the extent to which distribution is attributable to the accumulated profits of the company
मींस रिजर्व्स एंड सरप्लस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तो वही होते हैं ना, इमीडिएटली बिफोर द लिक्विडेशन। जो भी इमीडिएटली मींस एज ऑन द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, जो भी पार्ट आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में खड़ा है, वेदर चाहे वो कैपिटलाइज किया आपने या नहीं किया है, दैट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड डिविडेंड आपका माना जाएगा, एंड यू विल हैव टू डिडक्ट TDS at the rate of 10% on that deemed dividend under section 194. To deduct and deposit the TDS is the responsibility of the liquidator. जितना अमाउंट बनता है वो TDS काटिए और आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल आपसे समझाता हूँ आपको। इफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द XYZ कंपनी इन वॉलंटरी लिक्विडेशन इज 50 लाख रुपीज, that is 50,000 shares of 100. Suppose amount realized from the assets, जो total amounts assets हैं realize, उनसे realization कितना हुआ, suppose 80 लाख हुआ। After payment of liabilities, amount available for distribution to the stakeholder shareholder is 75 lakh। 5 लाख की लाइबिलिटीज थी, आपने पे ऑफ कर दी, अब 75 लाख रुपीज बच गया जो आपको शेयर होल्डर्स को देना है। नाउ 50 लाख इज द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल ओनली। कैपिटल का 50 लाख तो आप सिर्फ 50 लाख तो सिर्फ कैपिटल है, एंड रेस्ट टू 25 लाख विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22C of the Income Tax Act, and such amount, that is TDS 2,50,000, that is 10% of the amount, shall be payable to the Income Tax Department. Right? Now, tax liability under the Income Tax Act 1961. Now, notwithstanding anything contained in in section 45, where assets of the company are distributed to the shareholders, तो अगर कोई एसेट्स जो है कंपनी की वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है शेयर होल्डर्स को लिक्विडेशन में, सच डिस्ट्रीब्यूशन शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर बाय द कंपनी। वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कंपनी से, बिकॉज वो तो लिक्विडेशन में मिल रही है ना उनको एसेट्स, ट्रांसफर थोड़ा ना कर रही है कंपनी। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 45, 45 में क्या होता है कि एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट affected in the previous year shall be chargeable to income tax under the head capital gains। तो कैपिटल गेन्स में वो चार्जेबल होगा, ठीक है ना, पर यहाँ ट्रांसफर माना नहीं जा रहा। ट्रांसफर नहीं, कंपनी के ऊपर कंपनी कोई भी कंपनी की जो कैलकुलेशन है कैपिटल गेन की कंपनी नहीं करेगी यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी इज ट्रांसफरिंग द एसेट एज इट इज टू द शेयर होल्डर्स, राइट। बट in case of shareholder, section 46 subsection 2 of the Income Tax Act 1961 says that where a shareholder on liquidation of a company receives any money और अदर कैपिटल और एसेट ऑफ द कंपनी, कोई भी पैसा आता है उसके पास या एसेट आती है, ही शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द मनी सो रिसीव्ड और मार्केट वैल्यू ऑफ द अदर एसेट्स ऑन द लिक्विडेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी पैसा उसके पास आया या मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, जो भी एसेट उसके पास आई, वो वैल्यू जो है ना वो कैपिटल गेन में आएगी, और उस वैल्यू में से रिड्यूस क्या करना है, डिडक्ट क्या करना है आपको, लेस क्या करना है, एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट असेस्ड एज डिविडेंड विद इन द मीनिंग ऑफ टू सेक्शन 222C मींस डीम्ड डिविडेंड जो भी है। डीम्ड डिविडेंड का मतलब है जो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, दैट विल बी रिड्यूस्ड, दैट विल बी रिड्यूस्ड एंड रेस्ट विल बी द कैपिटल गेन। जो कैपिटल गेन होगा वो आपका वो कैपिटल गेन में आ जाएगा, असेस्ड एज डिविडेंड within the meaning of 220, and the sum so arrived at shall be deemed to be the full value of the consideration for the purpose of section 48, that is mode of computation for capital gain। कैपिटल गेन को का मोड ऑफ कंप्यूटेशन करने के लिए वो अमाउंट जो है वो कैपिटल गेन आ जाएगी। अब उस कैपिटल गेन जो जो सेक्शन 48 है इनकम टैक्स एक्ट का, वो दैट सेज कि उसमें से भी आपको आगे डिडक्ट करना है। जो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन आया उसमें से क्या रिड्यूस होगा, जो आपको कैपिटल पे करना है। कैपिटल तो उनका पार्ट, कैपिटल शेयर कैपिटल तो उनकी कैपिटल है ना, तो शेयर कैपिटल विल बी रिड्यूस्ड एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी द कैपिटल गेन। और यहाँ एक्सपेंसेस आपने कोई डेवलप करने के लिए कोई प्रॉपर्टी को उसको या कोई जो भी एसेट है उसको उसके ऊपर एक्सपेंस किया, वो आपका लेस होगा, प्लस शेयर कैपिटल लेस होगा, तो वो लेस करके जो भी अमाउंट बचेगा दैट विल बी द कैपिटल गेन। एग्जाम्पल की मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू लेता हूँ। इफ अ कंपनी हैज 100 रुपीज इन accumulated profit as in accumulated profits and distributes assets worth rupees 250 during liquidation, rupees 100 of that distribution is deemed dividend because that is accumulated profits, and remaining 150 is treated as capital gains in the hands of the shareholders. This deemed dividend rupees 100 is added to the shareholders income and taxed
while rest of the distribution rupees 150 is full value of the consideration for the purpose of section 48 and shall be subject to capital gains tax in the hand of the shareholders after deduction of whatever, जो भी उसमें से मैंने अभी बताया कि सेक्शन 48 में जो भी आपको रिड्यूस करना है, लेस करना है, वो लेस करके, राइट. So this was about the income tax. So this is the tax liability of the shareholder. Now powers and functions of the liquidator. अब लिक्विडेटर ने सारा कुछ कर दिया, सारे क्लेम भी आ गए और क्लेम आने के बाद वेरीफाई भी हो गए, वेरीफाई होने के बाद आपने पेमेंट भी कर दिया, एसेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. नाउ व्हाट द लिक्विडेटर विल डू? नंबर वन इज रिपोर्टिंग. Now liquidator will prepare the report and submit first preliminary report to the corporate person within 45 days. This is to be given to the corporate person, not to IBVI, not to the registrar of companies. तो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट होती है ये विद इन 45 डेज फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट आपको ये देनी होती है. इसमें देना क्या होता है? नंबर वन, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द सीपी के. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है सीपी का, कॉर्पोरेट पर्सन का. एस्टिमेट ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये ओनली दिस इज बेस्ड ऑन estimates of the assets and liabilities as on the liquidation commencement date on the basis of books of accounts of the CP के books of accounts के बेस पे आपकी assets और liabilities की क्या estimate है. The liquidator has reason to believe that books of accounts of the corporate person are not reliable, then such estimates based on the reliable record and data otherwise available to him. कोई और उसके पास अगर डाटा, अगर सीपी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर अवेलेबल नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो जो भी अदर रिलायबल रिकॉर्ड एंड डाटा है उसके बेस पे वो ये एस्टिमेट्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल प्रिपेयर. Whether he intends to make any further inquiry into the matter related to the promotion, formation or failure of the CP or conduct of business of thereof. कोई भी अगर वो करना चाहता है इंक्वायरी तो वो उसमें अपने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में लिखेगा. Proposed plan of action for carrying out the liquidation along with the estimates of the liquidation cost and timeline within which he proposes to carry out. तो एक proposed time plan भी एक्शन का लेगा, कितने टाइम के अंदर the liquidation of the company will be done. Liquidator shall prepare and submit the preliminary report, status report, minutes of the consultation with the stakeholders, and final report in the manner specified in Regulation 8. That I will discuss. The liquidator shall make available the aforesaid reports and minutes to the stakeholders either in electronic or physical form on receipt of an application in writing and cost of making such report available to them. तो ये सारा वो उनको जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको वो प्रोवाइड करवा सकता है लिक्विडेटर ऑन देयर रिक्वेस्ट. ऑल्सो obtain एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द स्टेक होल्डर. तो जिनको भी ये चीज़ें जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट, मिनट्स है या फाइनल रिपोर्ट वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनसे एक अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी उस कंसर्न स्टेक होल्डर या स्टेक होल्डर से दैट दे शैल मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सच रिपोर्ट्स and shall not use the same to cause any undue gain or loss to itself or any other person. ठीक है ना, वो एक अंडरटेकिंग उनको लेनी पड़ेगी अगर वो उनको ये रिपोर्ट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं. तो दिस इज अबाउट दी ऑल अबाउट द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट. नाउ कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन. रेगुलेशन 37. Liquidator shall endeavor to complete the liquidation process and submit his final report within 270 days from the liquidation commencement date where the creditors have approved the resolutions. इसका मतलब यह है कि अगर creditors हैं कंपनी में और creditors ने resolution को approve किया है, then period is 270 days for completion of the liquidation. Otherwise, it is 90 days in all other cases, right? If the liquidation process continues for more than 270 days or 90 days, क्योंकि कंपनी में असेसमेंट्स भी हो सकती हैं, लिटिगेशंस भी हो सकती हैं, तो अगर वो चल रही हैं कंपनी में तो आपकी कंपनी क्लोज नहीं ना हो सकती तब तक. तो इन दैट केस क्या होगा? इफ इट गोज बियॉन्ड 270 days देन द लिक्विडेटर शैल होल्ड द मीटिंग ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स विद इन 15 days फ्रॉम द एंड ऑफ 270 days. 270 डेज के एंड के विद इन 15 days को एक कंट्रीब्यूटर्स की मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी या 90 days के बाद, एज द केस में भी. And thereafter add every succeeding 270 or 90 days from the liquidation commencement date till the submission of application for dissolution. जब तक वो डिसोल्यूशन की एप्लीकेशन फाइल नहीं करता
every end of 270 days or every end of 90 days, he will have to hold a meeting of the stakeholders within 15 days, right? The liquidator shall present a status report indicating progress in the liquidation. Status report कब बनेगी? When वो क्या कर रहा है कि 90 डेज उसके कंप्लीट हो गए या 270 डेज कंप्लीट हो गए हैं, विद इन 15 डेज वो मीटिंग स्टेक होल्डर्स की मीटिंग कॉल कर रहा है, और स्टेक होल्डर की मीटिंग में वो क्या करेगा, इसमें एक स्टेटस रिपोर्ट रखेगा। वो स्टेटस रिपोर्ट में वो प्रोग्रेस ऑफ द लिक्विडेशन होगा। उसमें क्या होगा, सेटलमेंट ऑफ द लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, कितने स्टेक होल्डर्स की लिस्ट, कितने स्टेक होल्डर्स को मैंने सेटल कर दिया। डिटेल्स ऑफ द एनी एसेट्स रिमेन टू बी सोल्ड और रियलाइज, कितनी एसेट्स रियलाइज सोल्ड अभी रिमेन्स हैं, रिमेन टू बी सोल्ड एंड रियलाइज है। डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू द स्टेक होल्डर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनसोल्ड एसेट्स मेड टू द स्टेक होल्डर्स, developments in any material litigation by or against the CP, filing of and developments in application for avoidance of undervalued transactions in accordance with the chapter 3 of part 2 of the code, reasons for not completing the process within the time stipulated and additional time required for completing the process. Status report shall enclose the audited accounts showing receipts and payments of this liquidation since the liquidation commencement date. स्टेटस रिपोर्ट में उसके साथ एनक्लोज हुआ ऑडिटेड अकाउंट्स होंगे शोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट, जो भी रिसीट एंड पेमेंट हुई है ड्यूरिंग दिस पीरियड, they will be annexed with the status report. The liquidator shall file the status report before the board within 7 days of the meeting of the contributor. Contributors के मीटिंग के 7 days में वो एक जो है ना, the status report will be filed with the इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इन फॉर्म VL2। ये VL2 यहाँ पे ट्रिगर हो जाता है। VL2 फॉर्म मीटिंग ऑफ द कंट्रीब्यूटर विद रीजंस फॉर डिले इन द प्रोसेस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द लिक्विडेटर इफ एनी, एंड इट इज टू बी filed on or before 10th day of the subsequent month after the meeting of the contributors or replacement of the liquidator. Again, log in at IBPS site, go to dashboard, select VL forms, and then start filling VL form 2. No, final report. So after completion of the the liquidation process, the liquidator shall prepare the final report, and in this final report, it will consist of audited accounts showing receipts and payments of the liquidation since liquidation commencement date. So जितने भी audited accounts होंगे showing receipt and payment, and statement demonstrating assets of the CP has been disposed of, debts of the CP have been discharged to the satisfaction of the creditors, no litigation is pending against CP, or sufficient provision has been made to meet the obligations arising from the pending litigation. Statement with regard to all assets reflecting realized value, cost of realization, manner and sale of mode of sale, person to whom the asset has been sold. The explanation for shortfall if realized value is less than the registered value in the asset valuation report of the registered valuer, and any other relevant details for the sale. The liquidator shall send the final report forthwith to the registrar and the Insolvency and Bankruptcy Board of India. Now, liquidator shall submit final report and compliance certificate in Form H along with application for the dissolution of CP to the adjudicating authority. तो एक फॉर्म फाइनल रिपोर्ट और एंड फॉर्म का एंड कंप्लायंस सर्टिफिकेट इन फॉर्म H, वो एप्लीकेशन जो डिसोल्यूशन की एप्लीकेशन है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जो लगेगी, उसके साथ ये फॉर्म H अनेक्स होगा, राइट। This is the timeline with this I have discussed with you already. This is the during my presentation. Now I come to the next slide. This is application to adjudicating authority for dissolution of the corporate person. While affairs of the CP have been completely wound up and its assets completely liquidated, liquidator shall make an application to the adjudicating authority for passing an order for dissolution under section 59 subsection 8, and then copy of the order under subsection 8 shall be forwarded to the registrar of companies within 14 days. जिस दिन से ऑर्डर पास हुआ उसके 14 डेज में आपको RFC को इसको फाइल RFC के पास फाइल करना है, राइट। नो क्लेम्स
क्लेम प्रोसीड्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स ऑफ द लिक्विडेशन, अगर कोई रह जाती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। रेगुलेशन 39 सेज दैट इन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया shall maintain and operate an account to be called corporate voluntary liquidation account, CLV CVL account with the scheduled bank। तो आईबीबीआई उस कॉर्पोरेट का एक सीवीएल अकाउंट मेंटेन करेगा, कहाँ पे, शेड्यूल्ड बैंक में। लिक्विडेटर शैल डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड, कोई अनक्लेम्ड डिविडेंड रह गया, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसीड्स रह गई, ठीक है ना, इफ एनी अलॉन्ग विद द इनकम, को उनके ऊपर कोई इनकम अर्न किया है, कोई इंटरेस्ट अर्न किया है टिल द डेट ऑफ डिपॉजिट, तो liquidator shall deposit that amount in CVL account before submitting the application to the adjudicating authority under section 59 subsection 7, and if the liquidator fails to deposit, then he will have to pay deposit an interest of 12% per annum from the due date of deposit till the date of deposit. Liquidator shall submit the evidence of deposit of the amount to the ROC, तो उसका जो एविडेंस है डिपॉजिट के, मैंने डिपॉजिट ये अमाउंट उस अकाउंट में कर दिया, उसका प्रूफ जो है वो आरओसी के पास भी सबमिट करेगा और आईबीबीए के पास भी सबमिट करेगा इन फॉर्म जी, एंड अ स्टेटमेंट इन फॉर्म जी सेटिंग फॉर द नेचर ऑफ द डिपॉजिट अलॉन्ग विद द नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्टेक होल्डर एंटाइटल्ड टू रिसीव द अनक्लेम्ड डिविडेंड, कि किसने क्लेम नहीं किया उसका सारा नेम एंड एड्रेस भी वो उसमें इन फॉर्म जी में उसके अंदर वो सबमिट करेगा टू दी आईबीबीआई एंड आरओसी। लिक्विडेटर शैल बी एंटाइटल्ड टू गेट रिसीट फ्रॉम द बोर्ड ऑफ एनी अमाउंट डिपॉजिट, कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करता है तो आईबीबीआई विल इशू हिम रिसीट दैट विल बी द एविडेंस of deposit of amount. Now, prior to dissolution of this corporate person, if a stakeholder who claims to be entitled to any amount of deposited into the CVL account may apply to the liquidator in form I for withdrawal of the account amount. तो फॉर्म कोई भी स्टेक होल्डर है और बिफोर डिसोल्यूशन ऑफ सीपी वो अप्लाई कर सकता है लिक्विडेटर को कि मुझे मेरा एक क्लेम रह गया था और ये मेरे को अब मेरा ये अमाउंट जो है ना वो रिलीज करी जाए। आफ्टर वेरिफिकेशन द लिक्विडेटर शैल रिक्वेस्ट टू द बोर्ड to release the amount to him for distribution to the stakeholder, and on receipt of the request the board may release the amount to the liquidator, not to the stakeholder, to the liquidator. The liquidator, after making distribution, shall intimate the adjudicating authority for such distribution, and after dissolution of CP, a stakeholder may apply to the board in form I for an order for withdrawal of the amount. Even after this dissolution of the corporate person, any stakeholder may apply to the board. And if any other person other than the stakeholders, कोई और बंदा है जो स्टेक होल्डर नहीं है, उसका कोई लीगल हेयर है, कोई उसका एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई एग्जीक्यूटेंट है, कोई भी है, तो दैट पर्सन इफ क्लेम्स टू बी एंटाइटल्ड टू एनी अमाउंट shall submit evidence to satisfy the liquidator और दी बोर्ड रिगार्डिंग हिज एंटाइटलमेंट। वो उनको सबमिट करेगा एविडेंस के मैं इनका जो भी उनको प्रूफ देगा वो दैट आई एम एंटाइटल्ड फॉर दिस अमाउंट। इफ द बोर्ड इज सेटिस्फाइड दैट अ स्टेक होल्डर और अदर देन द person other than the stakeholder is entitled to withdraw any amount from CVL account may make order in favor of that person, उसके फेवर में वो ऑर्डर कर देंगे and amount will be released to them. Board shall maintain corporate person wise ledger. कॉर्पोरेट पर्सन का हर पर्सन का लेजर बनेगा ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड और विड्रॉन फ्रॉम द अकाउंट, एंड नॉमिनेट एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड एज कस्टोडियन ऑफ द अकाउंट। उस कस्टोडियन, उसका जो कस्टोडियन होगा वो कौन होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एंड प्रोसीड शैल बी विड्रॉन विदाउट हिज अप्रूवल, और उसकी कोई भी प्रोसीड है उसकी अप्रूवल के बिना वहां से विड्रॉ नहीं हो सकती। He will maintain proper accounts and get the same audited annually and placed before the governing board and shall forward to the central government. तो जो भी उसका अकाउंट है वो सारा वो मेंटेन करेगा, जो एग्जीक्यूटिव लेवल का जो ऑफिसर है, और वो उनको ऑडिट भी कराएगा और गवर्निंग बोर्ड को प्लेस करेगा एंड देन फॉरवर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू CVL अकाउंट which remains unclaimed undistributed, and any income or interest received in the said account after the completion of 15 years
15 साल तक अगर उसमें कोई भी रिमेन कोई भी अमाउंट है वो अनक्लेम रहती है, अनडिस्ट्रीब्यूट रहती है, देन दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. आफ्टर दैट nobody can claim. Now, Regulation 40 says about the suspension of the voluntary liquidation process after detection of the fraud or insolvency. Sorry. If the liquidator is of the opinion that liquidation is being done to defraud any person, because शुरू में वो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी में लिखते हैं ना कि वी दिस दी liquidation is not being the voluntary liquidation is not being carried to defraud any person, right? So if the liquidator comes to know that liquidation is being done to defraud any person and the CP will not be able to pay debts, यही दो conditions है ना, तो then he will make an application to the adjudicating authority to suspend the process of liquidation, and the adjudicating authority may pass any order as it deems fit. And when the dissolution application is filed with the adjudicating authority, at this stage, form VL3 that is required to be filed. In Forum 3, detail of dissolution application, unclaimed proceeds, realization and distribution made to the stakeholders, pending litigations, detection of fraud and insolvency, and VL3 is to be filed with IBVI on or before 10th day of the subsequent month after submission of the dissolution application of CP or withdrawal or suspension of the voluntary liquidation process. अगर withdrawal suspension है या dissolution application है, then VL3 is to be filed with the IBPI. Then after login to IBPI site, go to dashboard, select VL forms. After that, select VL3 and start filling form VL3. So VL4 includes the order of dissolution of CP, which includes the details of distribution of proceeds, receipt and payment. Details required in this form are carried forward from form VL3 and hence need not be filled again. Order of dissolution passed by the adjudicating authority shall be filed in form VL4 at the IBBS side with the ROC in form INC 28. ये ध्यान रखना, INC 28 एक फॉर्म है, इसमें ये जो भी ऑर्डर है adjudicating authority का, that is required to be filed within 14 days of passing of the order or withdrawal or suspension of application of the VLP. Again, process is same for filing the form. Preservation of records. Regulation 41 says, अभिनव जी है ना टाइम मेरे पास अभी? सर थोड़ा सा क्विकली करेंगे बिकॉज ऑलरेडी 2:10 है, बस बस तो अगर हम I will 10 take फाइव only 10 मिनट्स में five क्लोज करते हैं. minutes. Only I will take श्योर only सर, 5 श्योर minutes. श्योर Yeah. सर, श्योर. Liquidator shall preserve all the copies of such records which are required to give a complete account of the voluntary liquidation process, and liquidator shall preserve the copies of the records relating to the forming relating to or forming the basis of his appointment, handing over or taking over the assignment, initiation of will. All these records are required to be maintained by the liquidator. And these records, the court shall preserve the electronic copy of the records, physical and electronic, for a minimum period of 8 years, and physical copy of records for a minimum period of 3 years. Right? From the date of dissolution of the corporate person before the board, the adjudicating authority, appellate authority, any court, whichever is later. The liquidator shall, along with the application, provide the details of the manner of preservation of record के कैसे इसको हम record को preserve करेंगे. These are some case laws for withdrawal of and stay of the liquidation process. And benefits of liquidation, voluntary liquidation. Benefits क्या है? Controlled exit है इसका, because this is exit from the market in a controlled manner, minimizing disruption and ensuring an organized distribution of assets. Transparency इसमें रहती है, वो क्या? इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स इन अ लिक्विडेशन प्रोसेस, देयरबाय अवॉइडिंग पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स. Efficiency, VL streamline the winding up process, enabling a quicker resolution compared to traditional methods. Stakeholders protection, the interest of the creditors, shareholders, and other stakeholders are safeguarded through regulated and fair process. Legal recognition, the IBC provides a legal framework for voluntary liquidation
offering legitimacy to the process. This was all about the voluntary liquidation process. Right, sir. जी What should I say? It has been a very detailed, you can say, deliverable on this topic, and definitely I have a few of the participants asking for PPT also. So, if sir will allow, definitely we can share this PPT with them. Sir, Please, please. to take it forward, we have few questions. Can we take it quickly? Yeah, please, please. Sir, there's one question by Miss Minu Bala. Minu ji, you have written a question that, sir, 7 days or 5 days, which timeline has to be taken? So, if you can just unmute yourself and can ask this question with clarity. Minu ji, you are there? Hello. Yeah, please. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, just you said na within 7 days or within 5 days जो था liquidator का, which timeline have to taken to announcement का था ना local language में और English में जो हमें announcement करने थे liquidator के. Within 5 days only one जो public announcement है वो आपको within 5 days करनी है. Okay. और within 5 days कहीं पे भी कहीं कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ. Only in one regulation this is within 5 days that you Okay. have to Minimum publish. time is minimum 5 days and maximum 7 days. It's 5 to 7 days. No, 5 to 7 days. Only 5 days time is given in the law, in the regulation for publication in 2 newspapers. Okay, sir. Okay, thank you, Okay, sir. great. सर So, there's a प्लीज next question. ये नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दीजिएगा बिल्कुल मीनू जी, बिल्कुल, definitely will और share ये this PPT. रिकॉर्डिंग भी सर की बहुत अच्छा था Sure, sure. सेशन सर. Yes, yes. ये recording YouTube पे रहेगी and I will share the link of that recording also. ओके ओके. Yeah, great. So there's a next question by Mr. Jatinji. He's asking that, do we need to seek report from income tax department for final dissolution of the company, or who all need to be the party to that final dissolution application? Pardon? So do we need to seek report from income tax department for final dissolution of the company? No, not required. Okay. And who all need to be party to the Then, final dissolution application? हाँ जी, Sir, who who? all need to be party to the final dissolution application? Final dissolution application. Yeah. No party. Only Okay. the liquidator will file the application with the adjudicating authority. There will be Okay. no party, even not register of companies, no IBBA, no party. Yes, in some case, in my some cases, the NCLT has asked me to make party to the register of companies as well as to the IBBI. ROC has made ROC has given the report that this company has made all the compliances, and IBBA say that there is no provision in the law that we have to make any report to the adjudicating authority. Okay. Okay. Great. So is there any compliance checklist that need to be filled for dissolution of the company? Checklist, I have discussed each and everything in my PPT that कब आपको क्या क्या compliance करना है. There is a timeline given in at the end of the regulations कि आपको कौन कौन सी चीज कितने कितने टाइम में, इवन रेगुलेशंस में भी लिखा हुआ है कि कितने टाइम में आपको कौन सी चीज को कंप्लाई विद करना है. Okay. Great. So the last question is that if there is a situation that liquidator had caused the publication after a month of passing the SR due to delay in receipt of the document from the company, will it attract any issue before NCLT? There may be issue. There may be issue from the NCLT because in this voluntary liquidation process, the NCLT will see only the compliance, because you will Okay. have to file Form H compliance certificate along with the dissolution application. So उसमें अगर आपका non compliance होगा, then you will have to explain why this non compliance has been made. Okay. 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 Yes. I believe So these are the only. it is up to the NCLT in which way the NCLT takes that. Okay. Okay. Right, sir. Right.
I believe these are the only questions there on the chat box. If there's any question any participant want to ask, then definitely they can unmute themselves and they can ask the question directly from the sir. Jatinji, there's any deliberation from your end? No such query further. I think the queries already been asked that were more technical, and the session was self-explanatory, as sir has just said, that whatever the timelines are that it has already been conveyed during the session. And I'm sure that company secretaries being IP is nothing, not only the restriction, but also the opportunity for company secretaries that we can help the corporate entities to get into this channel for the exit and then align with insolvency professional like sir. And after that, we can also represent the client for dissolution of the companies. And that is one such area where, as a company secretary, I believe that we can definitely go and try our hands. And advisory, if we think that we are not the insolvency professional, we cannot restrict ourselves in advising all such matters. So I think this is one such area which everyone can look up to, and be it the fresher member or be it the experienced member. It is just need to think out of box and apply our minds and the domain we want to work in. So I think this is a great session. This was a great session, and definitely members will definitely had a good learning exposure. And as asked by Meenuji that PPT needs to be shared, and confirmed by Abhinav that it will be available on YouTube channel as well for detailed deliberation in future. Once again, thank you so much, sir, and thanks to Abhinav for choosing all those critical issues which are required and happening around the corporate world. So, congratulations to Chronicle Advisors for this particular series of webinar. Thank you, Jatanji. I believe the efforts is collective efforts because the participants are also there. They have been joining for last 2 hours, and yes, sir has given a complete time for today. So thank you again, sir, for giving us the time and sharing your valuable insights with us. Just as a token of gratitude, sir, I'm sharing one certificate of appreciation virtually here, and definitely this will be delivered physically also. So I'll request Jatanji to present it with you, sir. I'm just Thank you, opening sir. on Thank you. my sharing it with my page. It is there's a it is a small token of gratitude from our side, sir, Thank and you, sir. Thank looking you very much. for your blessings and guidance in future also, sir. And definitely we'll be Definitely, coming up with definitely. many. Whenever you will require me on my any topic, I will definitely be there. Thank you so much, sir. Sure, sir. Thank you. Thank you. Thank Thank you, you, Ji. sir. Thank you. Thank you very much, And sir. we'll be coming up with Thank you. many more critical topics in future. And again, requesting all the participants if this series can be joined by them and by their peers and professionals in a large number, so that we can make it a success. And again, thank you, Jatin Bhai, for motivating and supporting us. And thank you, sir. Thank you to Thank you. everyone. Thank you.